के विस्तार और दक्षता में सुधार के लिए एमएसएमई वर्गीकरण की निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाने में आसानी, भविष्य और तैयार कार्यबल तकनीकी अनुरूप की गुणवत्ता उत्पादन किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गरीबों को, किसानों को, हमारे देहात क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। महोदया, वित्त मंत्री जी ने बजट में SC ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं SC समाज से आता हूं, तो मुझे एक मौका दे दीजिएगा। मैं तो सोच रहा 10 मिनट बोलूँगा। SC समाज पूरे देश में बिखरा पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं था। जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से SC को लगा है कि हमारी भी कोई सरकार है। मित्रों, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का टर्म लोन जो होगा, इस दायरे में 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग आएंगे। एक मैं पुरानी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक सरकार कांग्रेस हुआ करती थी, तब अनुसूचित जाति के लोगों को अफवाह फैला करके गुमराह करते थे कि हम तुम्हें 50% छूट दे रहे हैं, 50% छूट दे रहे हैं। लेकिन छूट कितनी थी? मात्र 5,000 रुपया की, जिसमें भैंस, बकरी पालन, आपके जल्लब, बुग्गी दे करके उनको ठगने का काम कांग्रेस सरकार की नीति करती थी। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने SC ST अनुसूचित जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का काम किया। एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। मैंने देश में कई स्टेट में भ्रमण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड जो चलाई गई, 1 मिनट बस 1 मिनट दे दीजिए। एक पश्चिम बंगाल है जहां पर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किए जाते, नल से जल की योजना लागू नहीं की गई, और कांग्रेस की सेकेंड पार्ट है, कांग्रेस से निकल के वो पार्टी बनी और उसने गरीबों का दमन किया। ऐसे ही केरल में भी नल से जल नहीं दिया गया। अभी आपने देखा होगा, सफाई का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर में चलाया, लेकिन दिल्ली की सरकार में सफाई नहीं हुई। हमारी दिल्ली की जनता को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि सफाई के नाम पर, आयुष्मान कार्ड के नाम पर उन्होंने उन लोगों को बाहर करने का काम किया जो जनता का खून चूसते थे। एक बोतल साथ एक बोतल शराब फ्री दिया करते थे, लेकिन नालियों की सफाई नहीं करते थे। अब मैं अंत में इतना कहूंगा, हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोक महत्व का बजट देश को दिया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट प्रेजेंट श्री बिजलाल जी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। उपसभापति महोदया, मुझे आपने मौका दिया है बजट पर बात करने का। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में कहा है, उसमें प्रथम है कृषि, दूसरा MSME, तीसरा है निवेश, चौथा एक्सपोर्ट। मैं चूँकि समय आपने बहुत कम दिया है, अभी देखा 10 मिनट था, अब हो गया 6 मिनट, फिर 5 मिनट। मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा समय दे दीजिएगा। तो प्रथम इंजन है कृषि। महोदया, कृषि जो है ये 60 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। अगर मजदूरों को जोड़ लिया जाए तो उससे कहीं संख्या होती है, इसलिए कृषि का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और हमारी GDP में 19% सहयोग होता है कृषि का। कांग्रेस के समय में कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, नेगलेक्ट किया गया, लेकिन जब मोदी जी आए तो 2018 में पहले लागू हुई कृषि सम्मान निधि। इन लोगों ने क्यों नहीं किया? 60 वर्ष तक शासन किया। महोदया, ये 6,000 रुपये की बात नहीं है। ये 6,000 रुपये से इस देश का दलित आदिवासी भूमिहीन होने से बच गया। उसके पास 5 बिस्वा जमीन है, 10 बिस्वा जमीन है, वो कर नहीं पाता था, करता था तो मजदूरी। लोग कहते क्या करेगा इस जमीन को, और उसके बाद आज उस 5 बिस्वा पर उसको 6,000 रुपया मिलता है, जिसको वो पैदा नहीं कर सकता था। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई 2004 में, समाजवादी पार्टी की। उन्होंने एक बिल मूव किया और कहा जमीन बेचने में दलित की DM की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये परमिशन की जरूरत क्यों है? जिससे दबंग लोग दलितों, आदिवासियों की जमीन, पिछड़ों की जमीन खरीद ना लें। उसके बाद उसका इतना विरोध हुआ
कि वो बिल समाजवादी पार्टी सरकार पास नहीं कर पाई, अदरवाइज आज वो सब भूमिहीन हो गए होते। तो ये जहाँ 6,000 रुपया सहायता है, और सबसे बड़ी बात है इस 6,000 रुपये ने सम्मान निधि ने भूमिहीन होने से बचा लिया। सभापति महोदया, इसके बाद कृषि के लिए यूरिया में हम लोग आत्मनिर्भर भाई नामरूप मेला लगा है। हमारे प्रदेश में गोरखपुर में एक फैक्ट्री थी, 68 में लगी, 90 में बंद हो गई। उसको मोदी जी ने दोबारा किया, दोबारा वो आज उत्पादन कर रही है। तो इस तरह से तमाम सुविधाएं दी गई कृषि को, और कृषि के इसमें आज किसान हमारा खुशहाल हो रहा है। महोदया, मोदी जी के प्रयास से 75th जो जनरल असेंबली थी उसने वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। मिलेट वो फूड है, सावा, कोदो, मड़ुआ, काकुन, ज्वार, बाजरा, ये गरीबों का खाना होता था, आज वो सुपर फूड हो गया है। और सुपर फूड को पैदा करने का सबसे ज़्यादा अरिड एरिया में होता है, जहाँ सिंचाई की साधन नहीं है, कम है। तो आज उनका मिलेट सुपर फूड है और मार्केट में इसकी सबसे बड़ी कीमत है। सभापति महोदय, 38.4% मिलेट हम पैदा करते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस के आता हूँ। कांग्रेस में क्या हुआ था? PL 480 1954 में लाया था, वो लाल गेहूँ। महोदय, अभी हमारे ये दीपक प्रकाश जी कह रहे थे, झारखंड में गरीबी इतना है लोग कटहल का बीज खाते हैं। आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, मैं सभापति में बताना चाहता हूँ, गोबरेला अनाज खाते थे। जो जानवर जब दवाई होती थी बैल खा लेता था, उसके गोबर से जो अनाज निकलता था साबुत, उसको धुल कर लोग खाते थे उत्तर प्रदेश में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कांग्रेस के ज़माने में गोबरेला अनाज, साखू के बीज, ये तमाम चीज़ें लोग खाते थे। और ये PL 480 1969 तक जारी रहा। अमेरिका चड्ढी गांठता था अपने हम इंडिपेंडेंट डिसीजन जब कांग्रेस लीन थी, कहते थे तुमको अनाज नहीं देंगे। आज इतना अनाज पैदा हो रहा है, 80 करोड़ से 80 लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के पेट भरने की क्षमता हमारी है। और उस PL 480 की एक सौगात कांग्रेस की अभी बाकी है, और वो सौगात है कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम। पूरे देश में वो उगता है, उससे अस्थमा पैदा होता है, एलर्जी पैदा होता है। तो कांग्रेस का PL 480 की सौगात आज भी बीमारी के रूप में प्रसिद्ध है। ये थी कांग्रेस का जो किसानों का इन्होंने किया। दूसरा महोदया, दलहन। दलहन ये प्रोटीन का सबसे मुख्य साधन है ग्रामीण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारा उत्तर प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और अभी जोगी जी के सरकार में 37% दलहन का उत्पादन बढ़ा है। मध्य प्रदेश वहाँ बढ़ा। महोदया 3 मिनट लूँगा मैं। और ये हाल है कि आज हमारा बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा दाल का कटोरा हम कहेंगे, सिंचाई का साधन नहीं था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बेतवा और केन नदी का लिंक की शुरुआत की, उसको मोदी जी ने पूरा किया। और आज बुंदेलखंड में जब से सिंचाई की सुविधा हुई है, आज वो धन धान से भर गया है। वहाँ पर आपका डिफेंस कॉरिडोर है। और एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आज हम दाल प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाद्य में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वो डकैत पैदा करते थे। वहाँ पर उस क्षेत्र में चाहे चंबल हो चाहे पाठा हो, डकैत जो थे वो इसलिए पालती थी सरकार वहाँ की, जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, कि वो तय करते थे किसको वोट देना है, तो वो डकैत पैदा करते थे। उन्हीं डकैतों को, परिवारजनों को, एक बांदा का डकैत था, उस समय माही ADG लॉ एंड ऑर्डर था, वो मारा गया। महोदया 2 मिनट लूंगा, को ज़्यादा नहीं लूंगा। और उसके भाई को समाजवादी पार्टी सरकार संसद सदस्य बनाया, भाई भतीजों को बनाया उन्होंने MLA। तो मेरा कहना है वो समय की सरकारें डकैत पैदा करती थी, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समय बड़ा लिमिटेड है। तो मैं इस बजट का बहुत प्रशंसक हूँ। इसका मैं आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूँ माननीय सीता निर्मल जी को। और ये बजट 2047 का पूर्ण विकसित भारत का ये रोड मैप है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। श्रीमती महुआ मांझी।
थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैम। 5 मिनट। थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि इधर भी आपने दिया है। झारखंड का मैं अकेले प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने व्यापक आलोचना को भी जन्म दिया है। केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे के बावजूद बजट भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेता हुआ और झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्यों में राशि और परियोजनाओं के आवंटन में भेदभाव करता हुआ साफ प्रतीत होता है। झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक है, जो कोयला, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहाँ पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकता है और माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में धनबाद में आप जानते होंगे कि झरिया में कोयले पर आग लगी हुई है ज़मीन के नीचे सालों से। उसके लिए मुझे लगता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बजट होना चाहिए कि करकट्टा, खोलियरी, झरिया, जहां बहुमूल्य कोयला देश का जलकर राख हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहां तक कि देश की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में भी जो पॉल्यूशन के लिए पूरे देश में इस बात की चर्चा है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट बजट अलग से अलोकेट होना चाहिए। गरीब जनता का सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केंद्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2500 करोड़ की राशि डूबने की आशंका है। 3 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है। राज्य सरकार लगातार केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार मौन है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 2,11,422 करोड़ का आवंटन दिया गया था, लेकिन जनवरी 2025 तक केवल 29,517 करोड़ ही दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, यानी स्वीकृत राशि का 14% ही जारी किया गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां हमारे राज्य में जहां जल की भयानक समस्या है, उसकी किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड का एक जिला है गांडे, जो बिहार से सटा, एक विधानसभा क्षेत्र है गांडे जो बिहार से सटा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में मैं वहां गई थी तो मैंने देखा, एक व्यक्ति ने कहा गांव का कि मैंने 10 दिन तक वो स्नान नहीं किया था। वहां पर जितने भी जल स्रोत हैं लगभग सब सूख चुके हैं, चापानल, कुआं, कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए जल जीवन मिशन के लिए जो स्वीकृत राशि है वो अविलंब हमारे राज्य को दिया जाए। एनसीआरबी का 2022 का डेटा उठाकर देख ले, भारत में आत्महत्या दर 12.4 प्रति 1 लाख के साथ दुनिया में सबसे अधिक है और मानसिक विकारों का इलाज प्राप्त करने में 83% की कमी है, जो चिंताजनक है। इसके बावजूद मानसिक स्वास्थ्य को पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं मिला। युवाओं और छात्रों में डिप्रेशन और आत्महत्या खत्म करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य नीति और बड़े बजट की आवश्यकता है। झारखंड में रांची स्थित CIP भारत का सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, लेकिन इस वर्ष के बजट में इसी पूरी तरह से इसे नज़रअंदाज किया गया है। यह संस्थान अपने वातावरण और जलवायु परिस्थितियों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आदर्श माना जाता है, फिर भी केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। जहां आपको पता होगा कि तेजपुर स्थित LGBRIMH को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, वहीं CIP रांची की उपेक्षा की गई है। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा के संसाधनों के असमान वितरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ पक्षपात करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस बार के बजट में ऐसा प्रस्तावित है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत भारत सरकार देश के प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 प्रति माह का भत्ता
मिलने की बात कही गई है, जिसमें 4500 रुपये प्रतिमाह सरकार देगी और 500 प्रतिमाह कंपनी देगी अपनी तरफ से। यहाँ इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है कि 500 रुपये प्रतिमाह जो कंपनियां देंगी वह उनके पूर्व निर्धारित CSR से जाएगा, यानी इस तरह अगले 5 वर्षों में अपने CSR के मद में सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाएगी। यानी यह योजना पहले से चल रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कीमत पर भाजपा सरकार का अपना विज्ञापन है। इस तरह शेष 4500 रुपये प्रति माह किस मद से देने वाली है यह भी स्पष्ट नहीं है। बहुत संभव है वह भी किसी पूर्व निर्धारित बजट का डाइवर्शन है। अतः इस स्तर पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में कंपनियां काम करती हैं वहां के पॉल्यूशन से निपटने की जिम्मेदारियां कंपनियां उठाती हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में CSR फंड का इस्तेमाल आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, गरीबी उन्मूलन, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें सरकार अपनी तरफ से इंटर्नशिप मद में खर्च करने को बाध्य कर रही है। जबकि सच तो यह है कि इंटर्नशिप के बाद बस 2 मिनट कोई जॉब गारंटी नहीं है, जैसा कि मुझे मेरे सवाल पर माननीय मंत्री जी ने कहा था। ऐसे में हो सकता है कि युवा बाद में बाहर नौकरी के लिए चले जाए और स्थानीय लोगों को CSR मद से मिलने वाले लाभ भी ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने से साल भर के लिए ट्रेनिंग प्राप्त युवा अग्निवीर से बहाल हुए युवाओं की तरह ठगासा महसूस करे, जबकि अग्निवीर में तो फिर भी 3 साल की नौकरी है। वादों की गठरी, मैं 2 पंक्ति बोलकर खत्म कर रही हूँ कि किसी ने कहा है, ठीक ही कहा है, कि वादों की गठरी उठाए फिरते हैं, हक की बातों को दबाए फिरते हैं, रोजगार के नाम पर मिलती है तालीम और सपनों को बहलाए फिरते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सतनाम सिंह संधू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे इस सदन में 1 साल पूरा हो गया इस बजट सेशन के साथ, और मुझे दूसरी बार बोलने का समय मिला है। मैंने तैयारी 15 मिनट की थी, 10 मिनट का अंदाज़ा था, लेकिन 5 मिनट मिले हैं, सभी का समय कटा है और शहर व शायरी का माहौल भी है। तो मैं एक शेर अपनी लीडरशिप के धन्यवाद के लिए बोलना चाहूँगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे, मगर फिर भी कम निकले। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं अब तक के सबसे इंक्लूसिव बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन डॉक्यूमेंट है। मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूँ और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एलिमेंट्री या स्कूल एजुकेशन को 61% बजट एलोकेट किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इससे भारत के फ्यूचर की नींव मजबूत होगी और विकसित भारत और तेज़ी से विकसित भारत बनेगा। मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की टॉप पोजीशंस पर भारतीय प्रतिभा विराजमान है। ज़्यादातर टॉप इंडस्ट्री लीडर्स IITs और हमारी भारतीय संस्थानों के एलुमनी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तकनीकी शिक्षा के नए सूरज को उगाने का संकल्प लिया है। पिछले 10 वर्षों में IITs में छात्रों की संख्या 100% बढ़कर 1,35,000 हो गई है। यही वे नवाचार के बीज हैं जो भविष्य में कटिंग एज रिसर्च को जन्म देंगे और भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करेंगे। आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब भारत को ग्लोबल AI समिट पेरिस का सह-अध्यक्ष बनाया जाता है। हमने देखा जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मोदी जी के विजन को स्वीकारा ही नहीं, बल्कि दुनिया को उससे सीख लेने के लिए भी कहा। यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल AI समिट की प्रेसिडेंसी भारत लेकर आ रहे हैं। 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की सफलता के बाद अब 500 करोड़ की लागत से एक और अनूठा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, जो शिक्षा जगत में AI ड्रिवन पर्सनलाइज लर्निंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैम, आज पूरी दुनिया की नज़र भारत की
प्रगति पर है, लेकिन इन दिनों भारत दुनिया के सबसे विशाल समागम कुंभ की वजह से ज़्यादा चर्चा में है। देश में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा है। देश दुनिया से 40 करोड़ लोग पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं और इसमें से 15 लाख से ज़्यादा तो विदेशी हैं। सर, कुछ लोग इतने बड़े पर्व को एक इकोनॉमिक चश्मे से भी देखते हैं। उनका अनुमान है कि महाकुंभ से 3.25 लाख करोड़ की कमाई होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा देश सिर्फ आर्थिकता से नहीं चलता, हमारा देश आस्था से भी चलता है। बढ़िया। उपसभापति जी, लेकिन दुख की बात है कि जिस पवित्र जल को हम अमृत समझकर डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग उसको गंदा पानी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उससे पाप नहीं धुलते या गरीबी नहीं मिटती। ऐसा कहना केवल महाकुंभ में आए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के मन को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को भी दुखी करता है। जब आस्था का मजाक उड़ाया जाए तो दिल दुखता है, और जब मजाक उड़ाने वाले लोग इसी सदन में बैठे हों तो दुख के साथ निराशा भी होती है। चेयरमैन साहब, अब इसके लिए चाहे जितनी भी सफाइयाँ दी जाएं, ये पाप धुलने वाले नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब आस्था आहत हुई है तब बड़े नुकसान हुए और देश कमज़ोर हुआ है। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब के एक बहुत ही संजीदा शायर सुरजीत पात्र जी की कुछ लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पात्र साहब ने लिखा कि कुछ किहा तां हनेरा जरेगा किवें, कुछ किहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। उप चेयरमैन साहब, मैं पंजाब से आता हूँ और हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र श्री हरमंदिर साहब है। इसके 4 दरवाजे सब धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर हर घड़ी सरबत के भले की अरदास होती है, लेकिन इस पवित्र स्थान पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ समय फौज भेजते हुए टेम्पो तोपों के साथ हमला किया गया। साथ ही पवित्र सरोवर को निर्दोष लोगों के खून से लाल कर दिया गया और इसे सिर्फ लैंड ऑर्डर से देखा गया। अगर इसको आस्था से देखा जाता, सुनिए एक मिनट, बहुत स्पीकर है और ये कि जल्दी इसको खत्म करना। इस हमले में माननीय वित्त मंत्री जी आ जाएंगी। इस समय दौरान 25,000 से ज्यादा नौजवानों को घरों से उठा लिया गया और वो लापता। श्रीमती सुनेत्रा पवार। नहीं, तुम ही बात बोल रहे हो हैं? हाँ, आप बोलिए, माइक आपका आना है। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट का स्वागत तथा समर्थन करती हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके लगातार 8वें बजट के लिए बधाई देती हूँ। मैं इस बजट में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं, युवाओं, छात्राओं और आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि इस बजट की सभी को विकास के अवसर प्रदान करेगा। माननीय सभापति जी, उपसभापति जी और राज्यसभा के सम्मानित सदस्यगण, मैं आज आपके समक्ष जिम्मेदारी और विनम्रता की गहरी भावना के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं इस प्रतिष्ठित सदन में अपना पहला भाषण दे रही हूँ। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रख रही हूँ। माननीय सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने पूरे विश्व को एहसास दिलाया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। आज पूरा विश्व नए भारत की नई उड़ान के इस अमृतकाल का सामना कर रहा है। माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुत शानदार बजट पेश किया है। यह एक ड्रीम बजट है जो नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करता है। कर छूट में वृद्धि ऐतिहासिक है।
इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बजट से निश्चित रूप से हमारे नागरिकों का लाभ मिलेगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएंगे। माननीय सभापति जी, यह बजट हमारे बाजारों को ऊर्जा देगा, क्रय शक्ति बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करेगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। माननीय सभापति जी, इस बजट में प्रधानमंत्री अनाज उत्पादन योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता, भंडारण सुविधा, सिंचाई और ऋण सेवाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पहल से महाराष्ट्र को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। कपास और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में निर्णयों से भी राज्य को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के निर्णय का मैं स्वागत करती हूँ। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि पुणे जिला भी इस 100 जिलों में शामिल किया जाएगा। माननीय सभापति जी, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ यह बजट नए व्यवसायों के विकास को गति देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। माननीय सभापति जी, बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर मैं नई नीति रूपरेखा और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना को जारी रखने का स्वागत करती हूँ। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाएं निजी निवेश को आकर्षित करेगी और रोजगार सृजन बढ़ावा देगी। सभापति जी, यह बजट दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देता है तथा कृषि स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। यह बजट निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में महाराष्ट्र की प्रगति को मजबूत करेगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजित पवार और श्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र देश की प्रगति में अग्रणी राज्य बनेगा। सभापति जी, इस बजट में 52 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की नीति की भी घोषणा की गई है। ये पहल देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री फडणवीस जी, माननीय श्री पवार जी और माननीय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भारत को विकसित राष्ट्र और आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा। सभापति जी, इस बजट में सरकार ने उड़ान योजना को 120 स्थानों पर लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। सभापति जी, दूषित जल सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। यह जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों खतरे में डालता है। पुणे में मुड़ा मुठा नदी प्रदूषण के लिए सबसे संवेदनशील जल निकायों में से एक है। जयकांथन योजना के तहत मुड़ा मुठा नदी संरक्षण के लिए 230 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुझे आशा है कि इससे मुड़ा मुठा नदी को साफ करने में मदद मिलेगी। सभापति जी, पुणे में यातायात की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुधार की जरूरत है। इस बजट में पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे मेट्रो को निर्माण की तेजी आएगी। समाप्त करिए, साथ ही इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए इस पास का विकास जरूर होगा। सभापति जी, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कृषि उत्पादकता उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर रही है। इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऊर्जा संरक्षण और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए 86.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि कृषि सिंचाई में सुधार हो सके। सभापति जी, विकसित भारत के लिए निर्माण के लिए विकसित राज्यों का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैडम। महाराष्ट्र में
पहले भुवनेश्वर ग्रामीण क्षेत्र कलिता में जी। परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त लेकिन थी, वित्त मंत्री हैं, लेकिन अब इसलिए मुझे इसमें ये काफी है कि प्रगति खत्म हुई करने है। जल्दी-जल्दी। महाराष्ट्र सरकार कई सड़क नहीं भाई, विकास क्यों योजनाएं आप चल सबकी रही है। तरफ के वकील क्यों इस बने हो? बजट में महाराष्ट्र में ग्रामीण परिवहन को सबके बेहतर वकील मत बनाने बनिए में वो बाद में बनवा 683.51 देंगे करोड़ कभी। रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि को बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद मैम। मैं आपको माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के इस राशि भुवनेश्वर बढ़ाने का कलिता जी। अनुरोध करती हूँ। सभापति जी, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार में विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान कर 25-26. Shall I? So I want to begin with the comment passed by one of the senior most member in the opposition that this budget doesn't have a philosophy and doesn't have a policy. So I want to start with that this budget do have a philosophy, and which is the last man in the line and last village in the country. So development of the last man and the development of the last village, and starting with last village, is the philosophy of this budget. And if we talk about the policy, there may be difference in policy between the opposition and the ruling party, and that has been elaborated very clearly by our Prime Minister Sri Narendra Modi himself. And I quote, "I say it with a lot of pride. For 5 to 6 decades, there was no alternative model for the people. There was only one model. After a long time, after 2014, the country got to witness a new model. So it's a new model. It's a new philosophy. So policies are new. So they might differ on that. I quote again, we adopted the approach of saturation. The schemes should be delivered 100%. No one should be deprived and pushed towards hopelessness. In the past decade, at every level, we have tried to implement Sabka Saath, Sabka Vikas. That is the philosophy. That is the policy of this government. Sir, as I already said, that is the road map to arrive at Viksit Bharat, a developed nation. India as a developed nation. We have suffered a lot being the underdeveloped country. Now, the country's aim is to become a developed nation, and that developed nation encompasses zero poverty, 100% good quality school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, farmers making our country the food basket of the world. So this is the route, this is the road map by which the country wants to reach its aim, the Viksit Bharat. So the Union budget for financial year 2025-26 aims at setting pace for this Viksit Bharat. The budget acknowledges that the strength of a country lies in the people, not in the soil, and thus reinvigorates the Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. Sir, this budget is holistic and six-pronged goal in its sight, namely accelerating growth, securing inclusive development, enhancing spending power of the India's middle class, invigorating
private sector investments, and uplifting household sentiments. Sir, empowering middle class for a better tomorrow means that the incomes up to 12 lakh would be exempt from income tax, as against rupees 7 lakh until now. The budget intends that more money in the hands of middle class means more spending. Globally, the manufacturing industry is a major job provider. Thanks to the efforts of the Narendra Modi government, growth in the sector has picked up in recent years. According to annual survey of industries, I still have little time. The problem is there are 19. I know. I understand. Lalitha, 19 speakers are still left. I understand that. But Honorable Finance Minister will be here. 2 more minutes. We have to finish as to speak quickly as about possible. my state, Assam, and the Northeast. Sir, Assam has earned the distinction of being ranked 1 in the nation for achieving 100% direct benefit transfer under the National Social Assistance Program. Sir, the major milestone was the laying of foundation stone of Tata Group's 27,000 crore semiconductor facility at Zagi Road, promising 15,000 direct jobs and supporting 70 ancillary units. Assam's effort to attract mega investments have resulted in memorandum of understanding with 28 units and proposed investment of 14,800 crore, creating over 21,000. Thank you, Kalita. Now, Mr. Girirajan. Sir, I will take security. Honorable Mr. Girirajan. Sir, this budget. Not present. Sir, I will not go to the other technical matters like tax Mr. Dhananjay Mahadev. But I do want to raise the. नहीं हुआ। हाँ, मिस्टर महादेव। धन्यवाद उपसभापति जी। हाँ, बोलिए। आपने मुझे यूनियन बजट 2025 पे बोलने का मौका दिया। मैं हमारे नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और सदन के नेता जेपी नड्डा जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहां पे खड़ा हूं। लगातार 8वीं बार संसद में और देश के सामने बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सभापति जी, 2025 का ये बजट कोई आम बजट नहीं है। 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ओर लेने जाने के लिए एक कदम, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो दृढ़ संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसकी तरफ एक अहम कदम है। साथ ही साथ देश के 144 करोड़ लोगों की अर्थशक्ति बढ़ाने वाला, उनके सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और उसकी ओर अग्रसर ये बजट है। सर, कोविड महामारी के बाद दुनिया के कई सारे देश, इनकी अर्थव्यवस्था बिखर गई। कई सारे प्रधानमंत्री अपने देश की आर्थिक स्थिति संभाल नहीं पाए, लेकिन यह भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। सर 2012-13 की तुलना में इस देश का बजट का साइज अगर हम देखेंगे तो 2012-13 में 16 लाख करोड़ का बजट था। आज 2025 का ये बजट है 50,65,000 करोड़ का ये बजट बन गया है। विपक्ष के हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि इस बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सभापति जी, इस बजट का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो मिडिल क्लास को हो रहा है। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब 2.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो था उसको माफ़ किया गया था। फिर हमारी सरकार आने के बाद 5 लाख, 7 लाख और अब 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। और अगर सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। अध्यक्ष जी, ये घोषणा एक गेम चेंजर घोषणा है। विपक्ष के कुछ हमारे साथी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते वक्त हमने देखा, वो बोल रहे थे कि 12 लाख तक तो ठीक है, लेकिन अगर इनकम 12,01,000 हो जाएगा
तो पूरा 35% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने, आपके माध्यम से सदन में और देश के सामने रखना चाहता हूं सर। 12 लाख तक अगर इनकम है तो उसमें जीरो टैक्स है। 16 लाख तक अगर इनकम होता है तो 7.5% इनकम टैक्स लगेगा। 18 लाख तक अगर इनकम होता है तो 8.8% टैक्स लगेगा। 20 लाख इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 25 लाख इनकम है तो 13.2% टैक्स लगेगा। और 50 लाख अगर इनकम है तो उस पर सिर्फ 21.6% टैक्स लगेगा। तो मैं विपक्ष के साथी जो एक फेक नैरेटिव सेट करने की प्रयास कर रहे हैं उसकी ओर देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे सर ये 12 लाख तक का जो टैक्स माफ़ किया है उससे 8 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों को लाभ होगा और राजस्व में हमारी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए तक की छूट दे रही है। अध्यक्ष जी, इंसान मेहनत किस लिए करता है, कमाता किस लिए है? ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, व्यवसाय में व्यापार में वृद्धि कर सके, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो। मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख करोड़ रुपए की छूट जो हमारी सरकार दे रही है ये करोड़ों भारतीयों का सपना पूरे करने की ओर ये काम करेगा। अध्यक्ष जी, मैं कल विपक्ष के 2 दिन से सभी साथियों को सुन रहा था। वे कहते इस बजट में कोई विजन नहीं है, ये बजट निराशाजनक है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, एमएससी के लिए कुछ नहीं है। और कुछ साथी तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाजपा मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे, ये गरीब है। तो मुझे बताइए सर, ये देश कैसे चल रहा है अगर 80 करोड़ लोग काम नहीं कर रहे तो? और हमारी सरकार को कोसते कोसते ये देश की जनता को भी कोस रहे, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, उस पर भी हंसी मजाक उड़ाया जाता है। सर, गरीबों को जो कमाई होती है उसको खर्चा करने के लिए, परिवार पर खर्चा करने के लिए जो खर्चा होता तो पूरा अभी सरकार कर रही है। राशन दे रही है, मुफ्त गैस दे रही है, शौचालय दे रही है, 4 करोड़ घर बनाए हैं। इसकी वजह से उनकी आय बढ़ी है और इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। हमारे देश में जो भी निर्माण होता है सर, उसमें से 80% निर्माण एमएसएमई के माध्यम से होता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो चल रही है उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें अगले 5 साल में केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी सर। स्टार्टअप्स की मर्यादा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। सर, विपक्ष के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं सर 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। विपक्ष के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। ये बात सही है कि पिछले 10 सालों में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी है, 2 गुनी हो चुकी है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हमारी सरकार इन नौजवानों को रोजगार दिलाने में प्रतिबद्ध है। 2014 से पहले देश में कई सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, इंपोर्ट करते थे। आज भारी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर। सिर्फ डिफेंस की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले 80% वस्तुएं इंपोर्ट की जाती थी। आज सर हमारे देश में जो HL जैसी कंपनी है, मिग, सुकोई, तेजस, ध्रुव, रुद्र जैसे फाइटर प्लेन्स खुद बनाती है। पिछले ही महीने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 लड़ाऊ जहाज़ों का इनॉग्रेशन किया। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS विक्रांत जैसे लड़ाऊ जहाज 100% इंडिजिनियस हमारे देश में बने हैं। हम रोजगार की चिंता पूरी तरह से कर रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपको 1.5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, 1.5 मिनट। सभापति महोदय जी, आप 1.5 मिनट अब साधना सिंह जी बोले, उनकी मेडन स्पीच है। बोलिए मैडम। माननीय सभापति महोदय आप लेकर दीजिए, जो बचा हुआ है वो लेकर दीजिए। आज मुझे ये ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं 2025-26 के बजट पर अपने विचार राज्यसभा के इस प्रतिष्ठित मंच पर रख रही हूँ। महोदय, इस बजट को प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के जो दिशा निर्देश दिए हैं वे देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। महोदय, यह बजट न केवल हमारे विकास को गति देने वाला है बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा करता है। सबसे पहले मैं मध्यम वर्ग के लिए बजट के लिए किए गए सुधारों की बात करना चाहूँगी। मोदी सरकार ने हमेशा मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं और इस बार भी बजट में उन्हें मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मध्यम वर्ग
के सपने जितने बड़े होंगे, राष्ट्र उतना ही बड़ा होगा। सभापति महोदय, आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर उनके लिए सुधार किए गए हैं। इससे आम आदमी का जीवन आसान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। महोदय, किसानों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है और इस बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की मदद बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के तकनीकी सुधारों की घोषणा किया है। साथ ही कृषि बुनियाद ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। किसानों के लिए कृषि ऋण की ब्याज दरों में कमी और कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव का जीवन सरल समृद्धि होगा। महोदय, यह बजट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर को समाप्त करने का दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र और समृद्धि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के देश भर का विकास होगा। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएं की घोषणा की जिसमें वहां के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि नेतृत्व की जिसके कारण भारत का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों केवल हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी इसे बेहतर स्थान दिलाती है। महोदय, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का बजट है, मजबूती है। इसमें हमारा देश आने वाले वर्षों में आर्थिक महाशक्ति बनेगा। वित्त मंत्री जी का भारत का अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करना सुधारों की दिशा में कार्य किया गया है। उनकी मेहनत की नीतियों के कारण हमारे देश की वैश्विक मंदी के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखा है। 25-26 के बजट में उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक निर्णय भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवा वर्ग, किसान, व्यापारी, नौजवान को सभी वर्गों में सहायता प्राप्त होगी। महोदय, मोदी सरकार का बजट है ऐतिहासिक बजट की ओर एक कदम बढ़ाया है। हर योजना में छुपा समर्पण देश को नई दिशा दिखाया, आर्थिक समृद्धि का आधार बना, गरीबों का साथ बढ़ाया। विपक्ष का विरोध निरर्थक था, देश ने विकास की राह अपनाया। सभापति महोदय, इस बजट में भारत के समग्र विकास की ओर मोदी सरकार का एक बजट और मजबूत स्थिर रास्ता तैयार किया गया है। इस बजट में विकास के तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, घरेलू मानवभाव उल्लास का, मध्यम वर्गीय सबको साथ लेके चलना। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि विपक्ष दिल्ली से सीखे। दिल्ली की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। विपक्ष की आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से सीखे और समझे। हमारे मोदी जी देश के लिए देव पुरुष हैं। एक पंक्ति है, जनता के दिल में वही रहता है जो जनता के मन की बात करता है। भारत देश की शान है मोदी, जन जन की आवाज़ है मोदी। इस अच्छे बजट का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद। Now, Mr. R. Girirajan, you had missed your turn, but since Chairman has allowed you, you can speak. Mr. R. Girirajan, will you speak in Tamil? Okay. Sir, thank you, Chair. Thank you, Mr. Chairman. Sir, I would like to recall in 2019, when our Honorable Finance Minister presenting this budget, quoting from Pronanuru, which is an advice to Pandya King Ariyudai Nambi. From 2020, she regularly quoted Thirukural in her budget speech. But this time, 2025, no Thirukural, no Pronanuru. But she quoted one Telugu poet, Desamte Mattikadu, Desamte Manishulu. Is this government really think about the people? No. They think about some billionaires of this country. 1% of our population controls 22.6% of the income.
and wealth is 40.1%. Sir, our Tamil Nadu government contributing GDP to this country 9.04%, and what we are getting by way of devolution in only 4.8%. The 14th Finance Commission has recommended for 42% of tax devolution to states. The 15th Finance Commission has reduced it in 41%, but actual devolution is only 32%. Sir, I have no jealousy on any other state government of this country. In this budget on 1/2/2025, in the half an hour since the speech began, our Honorable Finance Minister Tamil Mahal mentioned 4 times for new schemes for Bihar only, but not even a single time uttered in the name of Tamil Nadu in the entire budget. Sir, the Uttar Pradesh government contributing GDP 8.19%, but they are getting devolution 17.94%. Bihar contributing 2.7% and getting back devolution 10.8%. Sir, we contribute more and we are not getting proportionate devolution. This is a stepmother treatment of this union government of Tamil Nadu. Finance Minister Madam, Tamil Nadu desam de mattigadu, Tamil Nadu desam also have manishilu. Why this discrimination? Why this stepmother treatment? Because we are opposition. Despite we are ruling better than this ruling union government, we can say proudly. Sir, for education, this union government allocation is only 2.5% of total expenditure, but our Tamil Nadu government allocating 13.6% of total expenditure. Enrollment of students in higher education, national average is 27%. On Tamil Nadu, we have 47%. Even the despite of devolution partiality of this union government denying to release Samaskara Shiksha Abhiyan funds of rupees 2,152 crore, despite of several requests made by state government of Tamil Nadu. Why this denial? You are compelling to sign PMC scheme. Why you are compelling to sign PMC scheme, which imposing in the honors? We won't accept. This is the linguistic terrorism imposed on state government. Because of this attitude of this union government, 40 lakhs Tamil Nadu students are suffering now. What Narendra Modi stated on 11/6/2014 on this Lok Sabha, I have experienced firsthand what happened. This was quoted by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. I have experienced firsthand what happens to the state if there is a favorable government in Delhi, and what happens to the state if there is an unfavorable government in Delhi. I have full experience. It was told by our Honorable President of this. I have experienced the difficulties that the states have to face. How a state is struggling, how a state is neglected, how a state's projects are blocked for personal gains, how conspiracies are hatched to prevent the state from developing. I have full experience of this. Therefore, today, a person who understands the problems of the states have been given the opportunity to serve the Prime Minister of this country. I am one who knows this pain. It was told by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. That's why he assured on the House that we will function, we will definitely find a solution on this. It was stated by our Honorable Prime Minister. This was originally he was changed his attitude. No. Still, this government has wantonly merged the railway budget with union budget. But Honorable Finance Minister not uttered railways anywhere in this budget. Sir, this budget not allotted funds to speedy completion of the construction of AIIMS at Madurai in Tamil Nadu. This budget not allotted funds for the construction of Greenfield Airport at Parandur in Tamil Nadu. Sir, this budget not allotted adequate funds to develop road infrastructure on national highways in Tamil Nadu. This budget not allotted funds for expansion of Madurai Airport as well as the establishment of the airports at Vellore, Neyveli. This budget never allotted a single naya paisa to Tamil Nadu's development. Thank you, sir. Mr. Madan Rathore. धन्यवाद उपसभापति जी। अभी बजट पर मैं विपक्षी साथियों को सुन रहा था और जिस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
2014 में सत्ता संभाली उस समय की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है, मैं थोड़ा विपक्षी साथियों को बताना चाहूँगा। देखिए, उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था और यही नहीं, बैंकों से टेलीफोन से पैसे उठा दिए गए, रात को भी बैंक खुलवा करके। इस प्रकार की अव्यवस्था थी, पूरी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था। और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संभाला और कितना परिवर्तन आया, ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, यूपीए सरकार में फॉरेक्स रिजर्व 304 बिलियन डॉलर था, जो आज 642 बिलियन डॉलर है। Will you authenticate? और यही मुद्रास्फीति उस समय 8.2 थी, आज 5.2 है। ऑथेंटिकेट करेंगे? FDI निर्माण क्षेत्र में 98 बिलियन डॉलर था, अभी 165 बिलियन डॉलर है। इंटरनेट कनेक्शन आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन लेना इनका, इसको ऑथेंटिकेट करोगे? क्या हुआ? ऑथेंटिकेट कर देना आप इसको। 25 करोड़ था, हाँ मैं कर दूं, अभी 97 करोड़ है। यही नहीं, आप परमाणु ऊर्जा क्षमता उस समय 4780 मेगावाट थी, अभी 8180 मेगावाट है। मोबाइल निर्माण के मामले में उस समय केवल 2 इकाई थी, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। एक्सपोर्ट के मामले में 466 बिलियन डॉलर था, जो आज 777 बिलियन डॉलर है। मेडिकल कॉलेजेज उस समय 387 थी, आज 706 है। MBBS सीटें पिछले 65 वर्ष में जितनी थी उससे यानी 51,348 थी और आज 1,08,940 है। यानी इन 10 वर्षों में, जो पिछले 65 वर्षों में जितनी नहीं थी उससे अधिक इन 10 वर्षों में कर दी गई। PG सीटें भी पहले 31,185 थी पूरे 65 वर्षों में, लेकिन वर्तमान में 70,645 PG सीटें बढ़ गई है। एम्स की बात करें तो पहले केवल 7 थी और अभी 23 हो गई। IIT पहले यूपीए के सरकार में 16 थी, आज 23 है। IIM पहले 13 थी, आज 21 है। विश्वविद्यालय पहले 676 थे, आज 1200 से अधिक, लगभग दोगुने हैं। ये परिवर्तन आया है, ये सब विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। एयरपोर्ट पहले 74 थे, आज 157 है। बहुआयामी गरीबी प्रतिशत ये भी घटा है। स्टार्टअप की संख्या पहले 350 थी, आज 1.25 लाख से अधिक है। क्या तुलना करेंगे आप? जनधन बैंक खाते पहले 15 करोड़ थे, आज 50 करोड़ से अधिक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता पहले 76 गीगावाट थी, आज 203 गीगावाट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.51 लाख करोड़ था, आज 11.2 लाख करोड़ है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पहले 46,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, आज 1.3 लाख करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जा रहा है। और मेट्रो रेल पहले 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में है। राजमार्ग निर्माण की गति पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, आज 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन है। विद्युतीकरण की स्थिति 85% थी, आज 100% है, 100% है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहले 12 घंटा मिलती थी, आज 22 घंटा मिल रही है। ये कोई कम बात नहीं है। मोदी जी ने बहुत संभाला इस देश को, उन्होंने किसान की भी चिंता की। आप जानते हैं कि कृषि के मामले में कई जिले पिछड़े हुए हैं, जो उनमें से अभी हमने 100 जिले पहले छांटे, ऐसे छांट करके, चुन करके, जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं उनमें, और मृदा का परीक्षण करेंगे। जमीन से 7, 8, 10 इंच नीचे की मिट्टी लेकर के उसका परीक्षण करवा करके किस प्रकार की वहाँ पर फसल हो सकती है,
किस प्रकार का उन्नत बीज दिया जा सकता है, उन जिलों को समृद्ध करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र में उसको मजबूत करेंगे और उसके बाद में दूसरे 100 जिले लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है ना, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस प्रकार की योजना मोदी जी ने दी है, ये विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। केवल विरोध करना ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन जो आया है इससे तो खुश होना चाहिए, ये तो उनको समझने की जरूरत है। यही नहीं, फसल बीमा दिया, और बीमा भी कब से, फसल बुआई से लेकर के फसल तैयार हो जाए, मंडी तक चली जाए, तब तक हर इश्यू पर कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तब भी वो फसल बीमित है उस किसान की। यही नहीं, ई नाम योजना दी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान अपनी फसल को और कहीं पर भी अपनी मंडी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में वो अपनी फसल बेच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी। ऋण सुविधा दी, क्योंकि फसल एक साथ मार्केट में आती है तो भाव घट जाते हैं, तो उस फसल को और गोदाम में रखने के बाद और वो कहीं भी बेच सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख किया, MSP बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। यही नहीं, और सब्जियां और फल उत्पादन के क्षेत्र में भी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेल मंत्री जी का भी, कि हमारे गंगानगर में और किन्नू बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ, और बंगाल में वहाँ पर हम भेजने के लिए हमने रेल मांगी, तत्काल रेल दे दी गई ताकि वो बंगाल के और लोगों को भी किन्नू मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था दी, यानी द्रुत गति से कैसे फसल को और खराब नहीं होने दें, तत्काल पहुंचाया जा सके मार्केट में, ताकि किसान को उसका भाव मिले। और यही नहीं, कपास, लंबे रेशे वाला कपास, ये उत्पादन के क्षेत्र में मैं सोचता हूं कि यदि इस प्रकार का कपास पैदा किया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वस्त्र उद्योग के लिए तो वरदान साबित होगा। और यूरिया संयंत्र लगाया। यही नहीं, MSME में भी डबल किया, MSME को भी मजबूत करने की कोशिश की, क्रेडिट गारंटी दी, नया स्टार्टअप, और 10 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ तक देने का ये प्रावधान भी किया। आपने समय दिया, समय बहुत कम मिला है, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। श्री रमेश्वर तेली जी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी मातृभाषा असमिया में बोलना चाहता हूँ। 2025 और 26 जी बाजेट आमार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण डांगरीनिये जी दाखिल करिले, ताक मैं समर्थन करी केटामान कथा कब विचारिছোঁ। निर्मला सीतारमण डांगरीनी प्रथम एनेका वित्तमंत्री जे 8 बार बाजेट दाखिल करा प्रथम आमार महिला। मैं वित्तमंत्रीक मोर फाলৰ পৰা धन्यवाद जनाइছোঁ। मैं बहुत बक्ता আছে, मैं बेसी कब विचरा নাই, केटामान कथाई कब विचारिছোঁ। এই বাজেটখন তৈয়াৰ কৰোঁতে সকলো ফালৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি বাজেটখন দাখিল কৰা হৈছে, আৰু নিশ্চয় এই বাজেটত এটা বিষয় मैं खूब मोर अंतर चुई गई, और সেইকাৰণে मैं কৈছিলোঁ যে मैं बाजेटत 2 मिनट हलो मोर बक्तव्य मैं राखिम। मैं डिब्रुगढ़ लोकसभार मैं सांसद आছিলোঁ, और सांसद হৈ থাকোঁতে मोर जी नामरूप सार कारखाना, এই सार कारखानाটো विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान, विभिन्न जनर डिमांड आसिल नामरूप सार कारखाना हब लागे।
আৰু ময়ো 10 বছৰ সাংসদ হৈ থাকোঁতে ময়ো এই বিষয়টো বহুতবাৰ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই উঠাইছিলোঁ, কিন্তু সম্ভৱ নহ'ল। কিন্তু এইবাৰ 2025-26 বাজেটত ইতিমধ্যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। নামৰূপত সাৰ কাৰখানা হ'ব, তাৰ বাবে নিশ্চয় মই যথেষ্ট সুখী। আৰু সেইকাৰণে 12.7 লাখ মেট্ৰিক টনৰ যি বাৰ্ষিক ক্ষমতাৰ এই উদ্যোগটো স্থাপন হ'ব, মই বিশেষভাৱে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ JP নড্ডা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণজীক। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাতে এই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাখন হৈছে। কাৰণ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ 40% শ্বেয়াৰ অসম চৰকাৰ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে মই গম পাইছোঁ। তো মই এই 4জন ব্যক্তিক ব্যক্তিগতভাৱে এই সদনৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই বাজেটত বহুত কথা কোৱা হৈছে। বাজেট বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কিছুমান নেগেটিভ কথাও কোৱা হৈছে। কালি এজন বক্তাই কৈ আছিল যে ট্ৰেইনত খানাত খৰচ পোৱা যায়, এনেকুৱা অৱস্থাত এই ৰেল বিভাগ চলি আছে। হয়তো কংগ্ৰেছৰ দিনত চলা ট্ৰেইনত তেওঁ চলিছিল, সেইকাৰণে এই কথাটো তেওঁ কৈছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ হয়তো ট্ৰেইনত উঠিছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া বন্দে ভাৰত নিচিনা ট্ৰেইন ইতিমধ্যে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চয় মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই সাংসদজনক এবাৰ বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনতো উঠি এবাৰ চাব লাগে যে বন্দে ভাৰত ট্ৰেইননো কেনেকুৱা ট্ৰেইন। তেনেকৈ এখন চৰকাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ ৰেল বিভাগে কাম কৰিছে। অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম হৈছে। অসমৰ আমাৰ বিদ্যুতীকৰণ কৰা হৈছে, নতুন নতুন ট্ৰেইন দিয়া হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ৰেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক। নিশ্চয় এই বাজেটত কোৱা হৈছে যে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আগত 3 লাখ টকালৈ দিয়া হৈছিল, এতিয়া 5 লাখ টকালৈ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই বাজেটত কোৱা হৈছে। নিশ্চয় ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ খেতিয়কসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আমাৰ অসমত আমি খেতিৰ ওপৰত যথেষ্ট আমি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু নিশ্চয় এই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদি আমাৰ খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আগতে আমাৰ বেতনভোগী যিসকল ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকে এই টেক্স যিটো আছিল এই টেক্সটো 12 লাখলৈকে ইতিমধ্যে দিব নালাগে, তেনেকুৱাও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই আমাৰ বাজেটত। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীক। তাৰোপৰি ইতিমধ্যে আপোনাক গম পায় যে আমি 80 কোটি মানুহক ইতিমধ্যে ফ্ৰীত আমি ৰাচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এনেকৈ অনেক কথা কোৱা হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীক আৰু এই বাজেটক সমৰ্থন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। Thank you. Mrs. Kavita Patidarji, not present. उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को इस उद्देश्य और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाले बजट को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इस देश की 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पंख देने वाली एक युगांतकारी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की वो प्रतिबद्धता है जो वादों से आगे निकालकर जमीनी हकीकत पर आज आधारित है। माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को समृद्धि का गुणक बताया है, जो बचत, निवेश और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आज इस बजट को देखते हुए मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के महू की मैं बेटी हूँ। वो महू जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है और जिनमें
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंच तीर्थों का निर्माण किया गया है, वो जन्म तीर्थ उनमें से एक है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि उस तीर्थ के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने वहां पर माथा टेका वो नरेंद्र मोदी जी थे। और उन्होंने सिर्फ माथा नहीं टेका बल्कि बाबा साहब अंबेडकर जी की दी हुई सीख को आत्मसात करते हुए उसे पूरा करने का संकल्प लिया। बाबा साहब ने पूरे दुनिया को समरसता का संदेश दिया और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करके उन हर एक प्रत्येक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उन्हें हराने का काम किया, वो आज महू की उस धरा पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं और वो महू की जनता को और महू की उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम करते हैं, ये कहकर कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। महोदया, मैं ये बताना चाहती हूं कि सालों तक सत्ता पे रहने वाली कांग्रेस को ये नहीं पता है कि गरीबी दूर कैसे होती है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि गरीबी कैसे दूर होती है। उन्हीं के ये सुशासनों का ये परिणाम है कि आज 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के बाहर आई है। आज हर एक व्यक्ति के सिर पर छत है, हर घर में नल है और नल में जल है, आज हर गांव तक सड़क बनी हुई है। और जब रेल की बात आती है तो मैं मध्य प्रदेश के लिए कहना चाहूंगी कि 2014 के पहले के बजट की तुलना में आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 23 गुना ज्यादा बढ़ाकर बजट मध्य प्रदेश को रेलवे में दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी को प्रेषित करना चाहती हूं। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल की 2000 नई सीट के साथ ही पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीट देकर युवाओं को पढ़ने के लिए शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, जब आर्थिक तंगी के कारण सांसें थम जाती थी, उन्हें जीवन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान जैसी योजना देकर किया है। और मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व है कि 70 वर्ष के अधिक आयु को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से हटाकर आदरणीय मोदी जी ने यह बता दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। महोदया, हम सब जानते हैं, मैं खुद किसान पुत्री हूं, किसानों को विपक्षी ने हमेशा चुनावी जो घोषणा है उसका पात्र समझा है, जबकि माननीय मोदी जी ने भारतीय विकास के एजेंडे में हमेशा किसान को केंद्र में रखा है। आज किसान सम्मान निधि के साथ ही धन धान कृषि योजना के साथ ही दलहनों में आत्मनिर्भरता बनाने के साथ क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का कर दिया है और कृषि के लाभ का धंधा कैसे बने ये दुनिया को बता दिया है। आज महिला होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देती हूं कि आर्थिक गतिविधियों में 70% योगदान महिलाओं को देकर और आज ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि माननीय मोदी जी के सुशासन में आज बेटियां फाइटर प्लेन भी चला रही है और आने वाले समय में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे अभूतपूर्व निर्णयों के द्वारा इस देश के नेतृत्व में भी भागीदारिता सुनिश्चित उनकी होगी। मैं माननीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद इस बात के लिए भी देती हूं कि जब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे देश को के सामने बजट को प्रस्तुत किया तो मध्यम वर्गीय परिवार के चेहरों पर खुशियां लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज 12 लाख तक की आय को कर से छूट प्रदान करते हुए सर्व सुख जो हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग के जीवन में खुशियां जो लाए वो ऐसी गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति चाहता है, तो माननीय मोदी जी ने उस बात को परिलक्षित किया है। आज विकास भी है तो विरासत भी है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए आज हमारे माननीय मोदी जी के कदमों से हमने ये दिखाया है कि अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये तीसरी जो पारी है उसकी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है। आगे सारा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखेगा। इस संकल्प के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री रामदास थावले जी। नहीं, आप बैठिए।
नहीं ठीक है, उनको मेरा है ना। आप बोलिए रामदास जी। आदरणीय मैडम, 2025-26 का ये बजट 2025-26 का ये है नहीं है खाली बजट, ये तो है नरेंद्र मोदी जी के विकास का आईना। ये खाली नए बजट, ये तो है नरेंद्र मोदी जी के विकास का आईना। ये बजट सुनकर परेशान हो जाएगा चाइना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना, नहीं तो 2029 में भी हो जाएगी आपकी दैना। इस बजट से खुश है मैन कॉमन, इस बजट से खुश है मैन कॉमन, क्योंकि अच्छा बजट देने वाली अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारामन। बजट से अब देश में रहेगा अमन, इस बजट से देश में रहेगा अमन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन। अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, मोदी जी के हाथ में ही होगा कल। पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, मोदी जी ही निकाल सकते हैं समस्या का हल। तो आदरणीय मैडम, ये जो बजट है, ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। ये बजट नीचे का आदमी, मिडल आदमी और ऊपर का भी आदमी, ये बजट जो है, बजट बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो और कोई भी पार्टी का आदमी हो, सबके लिए बजट है। मध्य प्रदेश के लिए भी है, कर्नाटक के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, असम के लिए भी है, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी है। ये बजट इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश इस बजट में हो गई है, और इसीलिए इस बजट से जाग गई है गांव-गांव की गली, इस बजट से जाग गई है गांव-गांव की गली। बिना मतलब मत उड़ाओ हमारे बजट की खिल्ली। बजट से मोदी जी की पूरे देश भर हो रहे बल्ली बल्ली। इस बजट से मोदी जी की हो रही है सारे देश में बल्ली बल्ली, विरोधी दलों की टूट रही है कल्ली कल्ली। जो नेता होता है विकासवादी, जो नेता होता है विकासवादी, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। पूरे देश की बोल रही है दादी, पूरे देश भर की बोल रही है दादी, बहुत ही अच्छे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो बजट है, इस बजट में मैडम सभी मंत्रालयों को बहुत ही अच्छा बजट दे दिया है। रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,000 से भी ज़्यादा करोड़ का बजट है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 2,87,00,000 का बजट है। रेलवे के लिए 2,55,000 का बजट है। गृह मामले के लिए 2,33,000 का बजट है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक के लिए 2,15,000 का बजट है। वितरण के लिए 1,90,000 का बजट है। और मेरा मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सभी लोगों को न्याय दे देता है। जो हमारे पास आते हैं उनको न्याय देते हैं, जो नहीं आता है उनको नहीं देते हैं। तो जिनको न्याय चाहिए वो हमारे पास आते हैं। और मेरे मंत्रालय का बजट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का 1,68,478 इतना बड़ा बजट मेरे मंत्रालय का है। ट्राइबल का बजट है 1,29,250 का बजट है। दलित हो, आदिवासी हो, नरेंद्र मोदी जी का ध्यान सबकी तरफ होता है। नरेंद्र मोदी सबको देखते हैं।
नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों का ऐलान किया है कि आइए हमारे साथ आइए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का भारत अगर बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम अनाउंस किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब माननीय प्रधानमंत्री थे और नदी जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था। डैम बनाने का प्रोग्राम भी बाबा साहब ने बनाया था और डैम से बिजली निर्माण होती है, डैम से पानी पीने के लिए मिलता है, खेती के लिए पानी मिलता है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर देश को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। या शिक्षा के लिए 1,08,000 का बजट है, संचार के लिए 99,000 का बजट है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 99,000 का बजट है, जल शक्ति के लिए 96,000 का बजट है। और इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि देश भर में 10 सालों में जनधन योजना के 51 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। मुद्रा योजना के कम से कम 56 करोड़ लोगों को मतलब लोन में मिला है। उसके साथ साथ जो हमारे उज्ज्वला योजना है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को आवास में मिला है, गरीबों को पक्का मकान मिला है और 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में शौचालय पहुंचा है। ये सब काम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने काम किया है। आदरणीय तो सोनिया जी इधर आई है और मैं भी आपके साथ रहा हूँ, मैं कई साल मैं आपके साथ रहा हूँ। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और मैं अभी इधर ही रहने वाला हूँ, उधर आने का विषय नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है, ये बजट बहुत ही स्ट्रांग बजट है, बहुत एक्टिव बजट है। धन्यवाद। निर्मला जी हमारी एक महिला है, महिला अर्थमंत्री है और नरेंद्र मोदी जी सबको न्याय देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति दलित समाज का बनाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति आदिवासी समाज का बनाया, नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे मंत्री बनाया, मेरे मंत्रालय का मेरे पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मेरे पार्टी का आदरणीय सभापति जी मेरे पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है, मेरे पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे मंत्री बनाया है। मैं तीसरी बार मंत्री बना हूँ, मैं तीसरी बार मंत्री बना हूँ, आप तो पहली बार बने हैं। और इसीलिए मतलब मुझे 3 बार मंत्री बनने का मौका मिला है और मोदी साहब बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब के सभी मेमोरियल काम पूरे किए हैं, उसके लिए जितना भी बजट चाहे उतना बजट दे दिया है। मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक मेमोरियल बन रहा है अध्यक्ष महोदय, और वहाँ कम से कम 1200 करोड़ से ज़्यादा मतलब मेमोरियल बन रहा है हिंदू मिल का। और वहाँ उसका बाबा साहब का स्टैचू जो है वो 350 फीट का है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मोशन है, बाबा साहब का जो विजन है, उसको पूरा करने के लिए ज़रूर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस बजट का समर्थन करने के लिए और मैं मतलब जो हमारी एनडीए है, एनडीए को मजबूत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूर हमारी सीटें कम आई है, लेकिन इस वक्त कम आई है, अगले बार हम 400 तक पहुँचेंगे और आपकी सीटें कम होती जाएगी, हमारी सीट बढ़ती जाएगी और हम देश को विकास की दिशा जाके ले जाने वाले हैं। और इसीलिए ये बजट जो है, ये बजट बहुत बड़ा सामाजिक न्याय का बजट है और इसीलिए इस बजट का मैं समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बजट। थैंक यू। Honorable members, papers to be laid on the table. Corrigendum to Appendix 5, the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Honorable Chairman, sir, I rise to lay corrigendum to Appendix 5 to the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name
in today's supplementary list of business. So this shows that the minister had misled the House. Yes. This shows that the minister had misled the House. Yes. Honorable members, it shows that parliamentary institutions are blossoming. Sentiments are taken into consideration, steps are taken, and this gives us another message. We must take recourse to law rather than engage in something which people cannot approve or is to their distaste. And if we have anything to add on this, it is appreciation. And we want more of such things to happen, because it is only exchange by dialogue, things happen. Because of our pressure that the corrigendum was presented, I'd like the Leader of the House to accept this. Honorable members, I express my gratitude to the government because the matter was brought to my notice and I engaged with the government. And Leader of the House met me. No, Leader of the House, I must give. If you are asking, one second. Honorable members, we have Shri S.D. Devgowda ji. In terms of age and experience, the senior most member of the Parliament and former Prime Minister. At this age, his presence, not only in the House but in committees also, is very encouraging to us, inspirational and motivational. I have permitted Shri S.D. Devgowda ji, taking into consideration all aspects, he will briefly reflect to his address. Rest will be laid on the table of the House. Honorable Shri S.D. Devgowda address on the Union Budget 2025-26. Sir. I am grateful to you, sir. I send the message that I am not keeping well. I will not attend today's Parliament. Having the sympathy, you said you lay the papers on the table of the House. Sir, Finance Minister has gone through a very issue. She has done her best to give the support to all sections of the society. It is not one section. All sections of the society have done your best to protect the interest of the people. I congratulate, and the Prime Minister also has one brochure has been prepared by the Prime Minister. I have gone through that, sir. This. All details have given. Yes. Now, I don't want to against your direction. There are 4 issues, sir. One dimension, the gist
Now, all youths are coming to cities. Your good self can understand the Bangalore population is 1 crore 40 lakh. Why? I have given a note. Others was given by the chair. I will place it on the table of the house. And the other is about the micro, small scale, medium industries. Just a note, I will place it on the table of the house. Another is this jackfruit. I am trying my best to trim jackfruit jamun. These to be form a board. I am not talking south or north. Bihar, the Makana board has been formed. In southern states, the jackfruit tramline is everywhere, even in the roadside it is there. If a board is formed, youths will start making the value addition, the product, and they will don't come to cities. That is one point. And the other is small scale industries. I have given a note, just only note. You would have directed me because I am running a fever. My conscience is not permitted to absent. I had come. Please. And the sir, don't sir, place it on the table. Only one point. Don't strain. Just sir. Godavari, Kaveri, linking. Sir, our leader is sitting. Drinking water is a problem. You know that. Bangalore city. Today, nearly 1,500 this water supply lorries, they are extracting, squeezing the poor people. I will leave it that stage, sir. Only one point which I will read. The Honorable Finance Minister has said, after making the provision of rupees 1,400 crores in the Union budget of 2022-23, the plan of the project, the Honorable Union Finance Minister stated that in budget speech that all the concerned states would be consulted in the matter of giving approval to the DPR and implementing the scheme. This is Honorable Finance Minister. All our friends, they demanded Godavari to Kaveri. If it is below Bedugundu, below Mettur, if the link is going to be made, what we have to do? Please, even at least the Godavari water
Karnataka is suffering. Please, with folded hands, I will beg you. Thank you, sir. I will, because chairman has directed me not to speak much. Lay it on the table. Thank you, sir. I will lay it only small scale industry. I have made a note, and rural young people are coming to the town. How to prevent it? I have made it a small note, 4 different sheets are there, and this tramline and this board to be formed, like Makana board. I have made a note. I will keep it with your kind permission. You have understood my difficulty. You asked me to lay it on the table. I am grateful. Thank you, sir. Shri Pradeep Kumar Verma, and I will request the Leader of the House that his speakers that are remaining are from your. We will have address of the Honorable Finance Minister at 4 p.m. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आपने केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के लिए एक रोड मैप के रूप में प्रस्तुत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लक्ष्य एवं सबका साथ सबका विकास के दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता यह बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। बजट में ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश, आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात, इन 4 क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की विकास को गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, निजी क्षेत्रों के निवेश को प्रेरित करना, सुगम बनाना एवं स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी तरीके से लेकर जाना प्रमुख रूप से है। शून्य कर श्रेणी को 12 लाख तक बढ़ाकर एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अर्जित ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने का कार्य इस बजट में किया गया है। आदरणीय उपसभापति महोदय, हम झारखंड के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रांत झारखंड पर विशेष ध्यान हमेशा से रहता है। उनके विगत 10-11 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड का हर बार के बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। जहां इसके पहले की जो विपक्ष की सरकार 2004 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कुल टैक्स के कलेक्शन में से 56,090 करोड़ रुपए हस्तांतरण किए गए थे झारखंड को, जिसमें इस 2014 से लेकर 24 तक में 302% की वृद्धि करते हुए 2,26,444 करोड़ रुपए टैक्स से हस्तांतरण झारखंड को किए गए हैं। भारत सरकार के ग्रांट में भी 266% की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 में जहां 28,509 करोड़ का ग्रांट झारखंड को मिला था, वहीं ये बढ़कर के अब 1,04,373 करोड़ तक पहुंच गया है।
तो ये दर्शाता है कि झारखंड पर विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया का ध्यान रहता है। रेलवे के लिए बजटरी एलोकेशन की बात जब हम करेंगे तो इसमें भी 16 गुना वृद्धि देखी गई है। 2009 से 14 में जहां 457 करोड़ का बजटरी एलोकेशन रेलवे के विकास के लिए झारखंड को हुआ था, वहीं 2024 से 25 में ये 7,302 करोड़ तक पहुंच गया है। झारखंड में नई रेल लाइनें बिछाने के 32 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुल 3,070 किलोमीटर नई रेल लाइन 52,885 करोड़ की लागत से बिछाई जा रही है। 57 स्टेशन झारखंड के अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। 2014 के बाद से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है, कुल 436 रेल फ्लाईओवर एवं अंडरपास झारखंड में निर्मित हुए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा 63,000 देश भर में आदिवासी गांवों के 5,000 करोड़ से अधिक आदिवासी जनता को लाभ पहुंचाने की जो योजना प्रारंभ की गई है, उसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के हिस्से आने वाला है। 2,800 करोड़ रुपए में झारखंड में 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इसका भी लाभ झारखंड के आदिवासी समाज को मिलने वाला है। मैं कंक्लूड करता हूं, कुल मिलाकर के हमेशा से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही है, झारखंड का बजट में हमेशा ध्यान रखा गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री डॉक्टर भीम सिंह। आ गया। आदरणीय उपसभापति महोदय, सक्षम सरकार की योग्य वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस बजट में वित्त मंत्री जी का ध्यान चारों तरफ गया है। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, धरती हो, आसमान हो या समंदर हो, सर्वत्र उनकी निगाहें गई हैं और एक खाका प्रस्तुत किया है जिसे 2047 में अपना भारत विकसित देश निश्चित तौर पर बनेगा। बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सर्वगुण संपन्न है। इस बजट से विकास में तेजी आएगी। वह विकास एकांगी नहीं बल्कि समावेशी होगी, विकसित भारत की आधारशिला होगी। और अब जब देखेंगे तो हमारी सरकार जो सक्षम सरकार है और हमारे नेता जो विश्व नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार बजट का आकार भी बढ़ा रही है। जब आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका मैं आदर से स्मरण करता हूं, उनकी सरकार ने अपना जब अंतिम बजट पेश किया था 2013-14 का, तो बजट का आकार 16.5 लाख करोड़ था। 16.5 लाख करोड़। उसके बाद हमारी सरकार आई, बजट में लगातार वृद्धि हो रही है और आज यह बजट का आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए हो गए। तिगुना से भी ज्यादा, यह तिगुना से ज्यादा वृद्धि हमारी सरकार ने किया। यह कैसे हुआ? यह कोई जादू से नहीं हुआ, यह हुआ है मोदी जी के दूरदृष्टि से, उनकी देशभक्ति से, कुशल वित्तीय प्रबंधन से। इन कारणों से आज हमारा देश दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया में आज जो राष्ट्रों का मान है, सम्मान है, वह केवल आर्म्स के पावर पर नहीं है, केवल शस्त्र और पर पावर पर ही नहीं है, शक्ति पर नहीं है। ये राजनयिक चल रहा है। जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का स्थान आज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने ले लिया है। हमारी सरकार
भारत को एक राष्ट्र, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र बना रही है। इसलिए आज दुनिया में भारत की आवाज सुनी जा रही है। और यह कैसे हुआ? हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। जहां पहले घोटाले पर घोटाले होते रहते थे, आज लगभग 10.5 वर्ष बीत गए हमारी सरकार के, कोई भी विपक्ष का भी कोई व्यक्ति हमारी सरकार के किसी मंत्री की ओर एक उंगली भी नहीं उठा सकता। यह बजट का परिणाम क्या होगा? इस बजट का परिणाम होगा गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा और सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं। यही तो चाहिए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और इन सारे चीजों का परिणाम होगा कि एक हंसता हुआ भारत होगा। भारत के लोगों पर, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और इसके लिए हमारे वित्त मंत्री ने इंजनों की कल्पना की है। 4 इंजन, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है। इन चारों के लिए सेक्टर वाइज हमारे वित्त मंत्री ने प्रबंधन किया है। और इसका फ्यूल होगा, ईंधन होगा, रिफॉर्म्स। महोदय, हमारी सरकार ने कृषि के लिए, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट के लिए विस्तार से किया है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि 5 मिनट का ही मुझे समय। मैं बिहार के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें डॉक्टर साहब। बिहार के बारे में कहना चाहूँगा। नहीं, अब समाप्त कर दें। 1 मिनट। श्री आदित्य प्रसाद, आप बंद करें। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस बजट पर बोलने के लिए अवसर देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट है आदित्य प्रसाद जी। सर्वप्रथम मैं इस दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट के लिए एक गरीब बाप का बेटा, गरीब माँ का बेटा, भारत माँ का लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उपसभापति महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, पिछड़ों, दलित, आदिवासी, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं के संबंध में अभूतपूर्व विकास किया है। मेरे गृह राज्य झारखंड, जो कि एक आदिवासी जनजाति बहुल राज्य है, मुझे अपार हर्ष है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के अंतर्गत 80,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 470 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसमें 1.25 लाख आदिवासी बच्चों तक को स्कूली की शिक्षा दी जा रही है। महोदय, किसान सम्मान निधि के रूप में एक धनराशि जो एक निश्चित समय अंतराल पर किसानों को सहयोग राशि के तौर पर दी जाती है, उसे बढ़ा करके 41,000 करोड़ रुपये किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि मैं गांव से आता हूं, भारत गांवों का देश है, गांव में किसान रहते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने में जो राशि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जो देने का जो शुरू किया है, मैं देखता था कि किसान जब खेती करने का समय आता था तो माँ बेटा से बोलता था कि बेटा कब आएगा, बीज कब आएगा, खाद कब आएगा। पिताजी बेटा से पूछते थे, लेकिन बेटा के पास पैसा रहता नहीं था। मजबूरी में वो अपना खेत में फसल लगा नहीं पाता था। माँ और पिताजी किसान रोते थे। और वैसे ही किसानों के आंखों के आंसुओं को प्रधानमंत्री जी ने पोंछने का काम किया है। आज किसान सम्मान पूर्वक सीना तान करके खेतों में फसल लगाने का काम कर रहा है। मुझे गर्व है कि देश आजाद होने के बाद हम लोग जिस प्रकार से गांव में कच्ची सड़कों में चलते थे, कभी सड़क में चल नहीं पाते थे। बरसात के मौसम में जब स्कूल जाते थे तो कभी सड़क में नहीं चल पाते थे, पगडंडियों में चलते हुए, आरों में चलते हुए, जंगलों में चलते हुए 7 किलोमीटर का दूरी तय करके हाई स्कूल जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग सपना में भी पक्की सड़क देखने का काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सरदार अटल जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया, सड़क बनाने की प्रथा को शुरू की। और झारखंड राज्य सौभाग्यशाली है कि राज्य अलग होने के बाद 2002 में
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य के रांची जिले के दुबलिया गांव में इस योजना का शुरुआत की थी। इसका हम लोगों वहां का गवाह है। महोदय, 25,000 बस्ती जो स्लम एरिया है, जो गरीब लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, गांव का किसान सड़क के भाव में सब्जी उपजाता था, खेती करता था, लेकिन बाजार पहुंच नहीं पाता था। साइकिल धक्का देते 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 भरुआ में, बोझा में दीदी लोग, माँ लोग खांची में सब्जी लेकर के बाजार जाती थी, लेकिन बाजार या तो देर से पहुंचती थी या पहुंच नहीं पाती थी। बाजार पहुंचती भी तो सब्जी बिकता नहीं था। किसान वहां पर सब्जी या तो फेंक के चला आता था या बिचौलिया औने पौने दामों में बेचने का काम करता था। आज प्रधानमंत्री जी का देन है कि गांव का किसान सीना तान कर, सीना चौड़ा करके बाजार में जाता है, सम्मान पूर्वक सब्जी और जो भी खेती करता है उसका उचित मूल्य लेने का काम करता है। महोदय, हम रेल का बात करना चाहेंगे। हम लोग सिनेमा में देखते थे, टीवी में देखते थे कि जिस प्रकार से वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन चल रही है, हम लोग कभी ऐसा सामने से देखे नहीं थे। लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी कुमार जी, माननीय मंत्री जी के सफल संचालन में इस प्रकार की ट्रेनें चल रही है। महोदय, 2004 से 14 के बीच में हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य में कोडरमा से हजारीबाग होते हुए रांची तक का रेल लाइन का शिलान्यास किया था। मगर जो 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार चली, एक पत्थर का भी ढेला उस लाइन में रख नहीं पाया। और जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ का लाल जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सरपट रेल लाइन चला। आज वहां पर तेजी के साथ ट्रेन चल रही है और देहात में, गांव में रहने माताएं बहने, जंगलों में रहने वाली माताएं बहने दत्तून पत्ता तोड़ करके, शहर जातीय सब्जी उगा करके, शहर जातीय और सम्मानपूर्वक बेच करके हंसते हुए घर पर लौटने का काम करती है। वैसे गरीब माताओं पिताओं का, किसानों का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस सरकार को आशीर्वाद प्राप्त है। महोदय, इस बजट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चूंकि मैं गांव से आता हूं, मध्यम वर्ग के लोग, किसान लोग, तो टैक्स के जो देना पड़ता था 12,000 रुपया, 12 लाख का जो सब्सिडी दिया गया है, लोग सराहना करने का काम कर रहे हैं। और 1 मिनट बहुत, आपका भाषण समाप्त। गाँव का गरीब व्यक्ति पैसे का भाव मिला, मोकरिया आपका भाषण समाप्त हुआ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री समाप्त हुआ, माननीय सदस्य समाप्त हुआ। माइक चालू है। माननीय उप सभापति जी, मैं इस सदन में बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। दिल्ली के सबसे पहले दिल्ली के भव्य जीत के लिए अपने माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ में हमारे नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि काफ़ी समय के बाद दिल्ली में बीजेपी का शासन आया, और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देता हूं कि पार्टी के लिए अच्छा काम किया। और साथ साथ में दिल्ली के मतदारों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी 100 साल पुरानी पार्टी को हैट्रिक लगा दिया, और एक बार नहीं 3-3 बार 0 दे के घर बिठा दिया। इससे सबसे बड़ा सुहाग क्या होता है? आप सुनो मेरी बात, मैं तेरी बात, आपकी बात सुनता हूँ भैया। यह सर्वांगीण विकास का बजट है। ये बजट गरीब, महिला, किसान और युवा के लिए लक्ष्य में रख के बनाया गया है। इस बजट में लेदर इंडस्ट्री को, खिलौना उद्योग को विशेष भार देकर मेक इन इंडिया पर भार दिया है। महोदय, इस बजट में डिजिटल इंडिया पर विशेष भार दिया गया है। देश भर में 5G और AI उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में जोगवाई प्रदान की गई है। महोदय, इस बजट में शिक्षा, कौशल और आरोग्य पर भी प्रावधान विशेष आयुष्मान भारत योजना तहत आरोग्य बीमा कवच 5 लाख से बढ़कर 10 लाख तक की गई है, जिससे प्रत्येक समाज को लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिला स्तर उपचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कैंसर और असाध्य रोगों के उपचार के लिए प्रत्येक जिला स्तर के हॉस्पिटल में डे केयर से कैंसर सेंटर केंद्र प्रस्थापित किया जाएगा। शिक्षा में भार देते हुए इस बजट में नई शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण स्तर पर 100 नए स्मार्ट रूम बनाने लिए बना रहे हैं। सरकारी शाला में पढ़ने वाले बच्चों को वैज्ञानिक
सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित होगी। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होगी, जिसके कारण 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को मेडिकल अभ्यास के लिए विदेश या तो अन्य स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। देश भर में 500 नए ITI प्रस्थापित होगी, जिसके कारण युवाओं में कौशल शक्ति बढ़ेगा। युवाओं को डिजिटल नौकरियों उपलब्ध होगी। सर, ये मोदी जी के शासन में कई साल से 80,000 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है मुफ्त में। वो तो हम मोदी सरकार दे रही है कि, लेकिन हमारे ओपोजिशन वाले को वो भी खुजता है, वो खुद तो नहीं दे पाए कभी किसी को, गरीब लोगों को। अब इसको दे, इसमें भी विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये नागरिक को मुफ्त अनाज मिल रहा है, वो भी मोदी साहब के हिसाब से मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया है। 12 करोड़ परिवार को टॉयलेट मिला है। 55 करोड़ को जनधन खाते खोले गए हैं। 50 करोड़ लोगों को बीमा कवच से जोड़ गया है। और अभी नई बात ये आई कि 70 साल की उम्र के बाद कोई भी अमीर हो, गरीब हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, जो हो, इसको 70 साल के ऊपर को सबको मुफ्त इलाज मिलने वाला है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि भारत देश में है। फॉरेन में कहाँ भी ये सिस्टम नहीं है, वो मोदी साहब ने अमल किया। इसके लिए मैं मोदी साहब को भी फिर धन्यवाद देता हूँ। महोदय, यह बजट समावेशी है, परंतु समय के साथ चलते हुए बजट को समर्थन करते हुए विकसित भारत की लिए घोषित किया गया इस बजट के लिए अपने हृदय से माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दीदी को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू डिप्लॉय द डिस्कशंस। ऑनरेबल मिनिस्टर। Thank you very much, Deputy Chairman, sir. I thank, I guess, more than 90 speakers. The last count when I entered this house was 88. Now I think subsequently 4 or 5 more have been added. More than 90 speakers have participated in this debate. And I'm grateful that they've spoken so much in detail about the various provisions made in the budget. I'll try to answer most of their concerns, questions, seeking clarification by grouping the questions and concerns raised, and broadly about 16 different categories. They've been grouped, and I'll try to speak about them. At the beginning, sir, at the very beginning, I would want to underline the fact that this budget has been made during a very difficult time. The challenges, particularly the external challenges, are very, very severe, most of which are beyond even any projections or predictions. There are no models that you can build and understand how the trends will be, because they are very dynamic, they're changing by the day. So it's very difficult to reasonably plan up for a budget. But despite that, we have tried keeping the assessments as close as possible to what can develop, keeping India's interest topmost. So this immense uncertainty is still playing out, and many Indian imports, which are very critical for our economy to grow, are also going to be left with uncertainty. So we are trying to make sure that the budget somewhat at least foresees all these and is ready for such eventualities. But even as we say about these things, the budget has very clearly identified the difficulties which are before us, because all these years, possibly even decades, we've been talking about globalization. Now we are facing a situation of fragmentation of the world. Whilst the post-COVID time has made states to borrow, and not just Indian states, but countries to borrow, to meet with the specific difficulties that they have to face, and also handhold people and at the same time give growth impetus,
has led to a situation where countries are borrowing and rising debt is a problem. Whereas fiscal prudence has always been the matter which gets advocated. People tell that economies will have to be managed more fiscally prudent ways. So globalization versus fragmentation, which is a reality, fiscal prudence versus growing global debt, which is a reality, and everybody wants to have free market situation, but you have aggressive tariff barriers and non-tariff barriers. So you're facing a world where a lot of talk goes on about keep the markets free, but no one country wants to have free market when it comes to their interest. So with all this, the usual practice would be that you will approach multinational institutions to seek redressal or to seek handholding. Multilateral forums have also become today very diluted. They seem to be there but not really exerting themselves even with the given framework of things. So bilateral partnerships and regional forums are the ones which are really governing the situation. So much contrary to all those principles with which the world has moved in terms of an economic order, is all going through a major change. So the uncertainties can be defined in some terms, but you really can't predict what moves. In this situation, the first advanced estimates from the NSO has said that India's economy will grow by 6.4% in real terms and about 9.7% in nominal terms. So the budget this year, we have kept our goals in such a way that we are able to accelerate growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, uplift household sentiments, and also to directly or indirectly enhance spending power of the Indian rising middle class. In all this, we have seen that there are 4 groups of people that if you touch and serve, the impact will be across the country: Garib, Youth, Annadata, and Nari. And therefore, every scheme that we have before us has something to bring in terms of benefits for these 4 large groups. Sir, I want to take a minute to put it before this august House that when we are talking about capital expenditure, because I've heard quite a few members speaking about how capital expenditure is probably coming down, the shift is now from moving away from capital expenditure to boosting consumption. I just want to highlight the thought about or the idea of effective capital expenditure. What it does include is core capital outlays in the union budget and also the grants and aid for creation of capital assets to the states. So, though the grants and aid for creation of capital assets is accounted as revenue expenditure in the books of the union government, yet they go to the states to create capital assets, and therefore they are also effectively, eventually, only capital expenditure. So in the budget in the financial year 25-26, which is before us, the effective capital expenditure is projected at 15.48 lakh crore as against 13.18 lakh crore in the RE of 24-25. So there is just no reduction in capital expenditure. But even more, if we take this together with what is done by the public enterprises, they are independent of the budget, they do their own, but they also account for the capital expenditure. If we were to take that also on board, if we take that public enterprises from their own resources, when they invest money for capital expenditure, they do it substantially. And so if I were to include that for the year 25-26, the capital outlay, which I would define as effective capital expenditure, is likely to be in the range of 19.80 lakh crores. So, the concern expressed by some members, which I take up in detail a bit later, but right up front, saying, have sectors been denied money? Have some sectors received lesser than what they received last year?
I just want to assure the House, in terms of the numbers that have been presented in the budget, I'll restate them. Sectoral outlays for 25-26, sir. Agriculture and allied activities, 1.71 lakh crores. Rural development, 2.67 lakh crores. These are already given in the budget, it's before us. Urban development and transport, 6.45 lakh crores. Health and education, 2.27 lakh crores. And defense spending, excluding defense pension, is 4.92 lakh crores. So we have not cut down on any sectoral allocations. The total resources being transferred to the states in 25-26 is 25.01 lakh crores. Resources being transferred to the states, which shows an increase of 4.92 lakh crores over the actuals of 23-24. So the portion which has to go to the states are also not cut down. On the contrary, substantial increase has been made in them. So if I spoken specifically about capital expenditure and also sectoral allocations, I want to, because this is the upper house, very experienced members coming from various walks of life are here and who have been in governance are here. I want to highlight a feature of budget making in the last 4 years, 5 years, which speak for themselves. Just 2 examples for each of the years, sir, which is very important considering that members would be eager to know as to how public finance is being managed. Sir, I begin with a contrast, not so much for talking about whose period it was, is it my period, your period, but when crisis hit countries and when crisis will have to be managed. And when managing crisis, you will have to adopt some methods and post that the revival. In that sense, I would like to just compare between the global financial crisis as opposed to the crisis of COVID-19, when India's government's attempt resulted that India became fragile 5, whereas after COVID, the attempt that has been made with targeted support to people who needed help has lifted India from the position where it was in fragile 5, post-COVID, from where it was to where we are today on the top 5 economies. So the measures that have been taken are not attributable to one budget itself. It has been sustained over several budgets since 2020. I want to highlight some features for it from each of them. For instance, 2020-21 budget reveals recurrent themes. From then, it reveals recurring themes of transparency to foster credibility of budget making, reforms to catalyze growth, targeted social security, and use of technology for obtaining value for public money. Today, I think it's a very appreciable point. Today, all over the country, concern about how effectively is the taxpayers' rupee being spent is widely heard. You hear from different sections of the society saying taxpayers' money, you're not, which is a right concern citizens should have. I just want to highlight that in 2020-2021 budget, sir, we brought in the element of transparency and strengthening cooperative federalism. How did we do it? We took a big step of bringing on board FCI's, the Food Corporation of India's, off-budget borrowing of about 1.2 lakh crores onto the budget. We said, yes, it might hit us from the point of view of fiscal deficit, but we will have to do it, bring in credibility to the budget making and transparency. We also strengthened the partnership with the states. It is that year that, not because Finance Commission has recommended it, not at all, we brought in a 50-year interest-free capital assistance to the states, which was not on the basis of a recommendation which the Finance Commission gave. But we started the process then, and when we started it, we just extended 12,000 crores to the states, saying 50 years, you take it, no interest to pay, you can go ahead with what you want to do in terms of capital expenditure. All states,
No state left out in that. And that 12,000 crores of 2020-21 today has reached, today for this year has reached 1,50,000 crores. 50-year interest-free. This year's budget for this year gives 1,50,000 crores for states. No, they can choose the projects they want to do and complete it, asset building. So that has been started from 2020-21, and every year some amount. It's been growing and it has reached this level today. 21-22, sir. Again, fiscal transparency and technology adoption was taken up for the budget making. We regularized long pending outstanding dues, and this is very interesting, sir. And I'm sure the House will appreciate this point, that we regularized long pending outstanding dues amounting to over 81,000 crores payable to the states under devolution of central taxes for the period. So I was astonished when I started working on it, but I'm glad to say we resolved it. For the period, 81,000 crore for the period, beginning 96-97 until 2017-18, we had to do the calculations to make sure every state in this 81,000 crores, which has been pending over decades, is given that money back. We did that in 21-22. Because Honorable Prime Minister has been a Chief Minister of a state, he knows the difficulty of states, and he said, please sit and clear this up. I don't want this waiting. From 97, it has been waiting, clear it. We cleared 81,000 crores in the year 21-22. I'm very happy that we sorted that out with the consultations held with states as well. So similarly that year, sir, I told you the previous year, we took on board the Food Corporation of India's amounts which were outside of the budget. This year, after having given states their dues, which has been pending from 96-97, we took on board the off-budget borrowings of urban housing from the Ministry of Urban Development, 33,000 crores which was outside of the budget, off-budget borrowing. We brought that back onto the budget, which means we've taken the responsibility to address this. And we also prepaid it. I would like to highlight the fact that clearing debt prior to its due time has also been methodically taken up in each one of our budget exercise. That was done in 21-22. And the third step, using technology so that states and center will be clear as to where the money lies, and using technology, they can see the flow of money and see where the treasury is receiving the money for which project, and therefore go ahead with state's contribution and build that. So the single nodal agency, which is for timely release of money and technology driven, so everybody knows where the money lies, was brought in 21-22, which has actually reformed. There are later instances where I'll explain about how that has helped us to see where money is lying idle, and therefore to that extent borrow less, pay interest less. So that has helped in fiscal management, sir. In 22-23, sir, debt consolidation was given a big priority. Strengthening states' liquidity position has been a big priority. I'll just give an example. Railway Minister is just sitting next to me. We've commenced complete financing of the capital outlays of railways and highways from the union budget. So this has lowered the cost of borrowing for railways itself for their projects, and as a result, today we are able to speedily fund their capital investments. We also advanced, and this will be very much in favor for the states, we advanced the devolution date. Every month, tax is devolved to the states. For years, it's been done on the 20th of the month. We said, why should it go till the middle of the month? Why can't it be paid earlier? So we moved the date from 20th of the month to 10th of the month itself so that states can get it earlier. That was done so that the cash position in the states can be improved. Sir, we also did one more for the budget. Every year you have your budget estimates given during the budget presentation. And in the middle of the year, suddenly one program loses enough money. They say, we need more, so will you raise it in the supplementary demands for grants? Very well. There was a practice all the while to have 3 times supplementary demands.
So it had two implications. One, your estimates were going for a toss, or your estimate itself was not based on the data which you get from the ground, and therefore we wanted to streamline that. And from that year, 22-23, we have brought in a fairly clear system of there will be supplementary demand, but only twice in a year, so that you are able to bring in a BE which is far more realistic, rather than go along the year and keep adding for supplementary demands. So we have brought in that kind of a discipline for ourselves, much more than for anybody, and that is paying adequate rewards. Last, sir, last but one, 23-24, sir, we made sure the taxpayers get a relief. So the new tax regime was brought in, and we made it as the default regime, so that unless a person wants exemption, he will be part of the new tax regime. But if he states that he wants to be in the old, he can still be in the old if he thinks he's better off in that. So we brought that in, and we also raised the tax limit, meaning up to certain income that you don't pay tax at all, to 7 lakhs in that year. And using marginal benefit, meaning marginal relief being given to the taxpayer, up to 7.27 lakh, an individual doesn't need to pay tax, was brought in 23-24, which of course this year we have gone up to the level of 12 lakhs. So 23-24 also saw a special scheme for women, Mahila Samman Bachat Patra. We brought it in 23-24 with very high interest for them, so that they benefit out of that money. We also doubled deposit limits in senior citizen savings schemes and monthly income scheme. So that way, we were continuously bringing changes. And if I come to the current budget, sir, you see the trend continuing, new service and new instrument of service. That is in 24-25, I'm sorry, last budget, the July budget. New service and new instrument of service limits, meaning states, ministries will be given higher limits up to which they can spend. This has been recommended by the PAC, and also we consulted the CAG, and we brought it so that departments will have greater flexibility in spending more, rather than for small amounts coming and seeking appropriation from the supplementary demands. So that has given more facility, more freedom for the departments to spend when they have an issue of a priority spending area. This is the 4th time since independence such a review has been undertaken, and we have brought it in this year, in 24-25 July budget. Similarly, one other major reform that we brought in was short-term T-bill borrowings have been drastically reduced. This has contributed for greater liquidity in the markets, in the financial system, so that private borrowers don't suffer. We don't get in, government doesn't get into the market and crowd them out. That situation shall not occur, because we've now chosen to have short-term T-bill borrowings drastically cut down. We also did a buyback of G6 for about 88,000 crores. This one single step, sir, has resulted in interest saving of about 5,000 crores, apart from infusing liquidity in the system. So other than what we do through the schemes, other than what we give through devolution, for managing the taxpayers' rupee far more efficiently, these are the steps that we've taken, and repeatedly proving to the taxpayer that paying the tax truly is going for nation building. So we have also, in the July budget, shown very clearly that we will have a debt consolidation pathway, and that pathway will enable our government debt to be brought down closer to 50% of GDP, from nearly 58% where it is now, 50% plus minus 1% by 31st March 2031. That has been explained in the documents which have been given to the budget document last July budget. Sir,
Again, if that is the trend through the budget making and the effective use of taxpayers' money, questions were raised if the fiscal consolidation has been at the cost of spending. I think in the brief opening remarks itself, I explained how there has not been any reduction in the money being given to the social sector. It actually balances available money wherever it is available effectively, and that is not cut down. But if questions are being asked about you're giving lesser now, whereas the project demands more, I broadly highlight the fact that because technology is now available for both the center and the states, you can see where the money is lying unutilized. And if that money is utilized, bills are raised, immediately we shall fund the money to the states. Now, whether it is lying in your treasury, whether it is lying in the SNA account, which is for a particular scheme, money is lying, sir. And big amounts are lying in various big schemes across states. I'm not pointing out for one state or another state or the third state. But if money is lying there, it is a money given and many times borrowed money. If it is lying there, am I expected to borrow more money and put it in there and keep paying the interest? Or is it better that you use the money and post that I can borrow timely and give it to you? Or if I have the comfort of my revenue, I can even give it. But that which is lying unutilized today is available for the governments, wherever they are, state or the center, to see and to use it much before demands are made for additional resources. I wouldn't get into reading how much is lying where. It is part of the budget set of documents. You can see it in the budget document which is available, and it is in the annexure statement 4AA. So any honorable member can see which scheme money is lying within their state and use it far more effectively. And that would only make efficiency far more for the taxpayers' money. So, I've already said about the money which is going to the schemes, so I wouldn't take more of the House's time. About growth challenges, I understand two honorable members have spoken. I think it was Sulata Dev from BJD and also Honorable Member Kapil Sibal. So it is a matter of fact, as I said earlier, that there are challenges. There's no doubt about the challenges that not just India, every country is facing. For India in particular, to explain why the Q4 growth was low and why we think it is manageable in the forthcoming quarters is because of the adverse weather conditions which prevailed during the year, excess rainfall in some states, drought in some others, and also the model code of conduct because of the Lok Sabha elections. Most departments could not spend their money in time. As a result, the multiplier was not as much as you would calculate when you spend on your capital expenditure. Sir, former Finance Minister P. Chidambaram has raised quite a few issues, and I have answers for all of them, answers based on data. And I understand he has also communicated with me through a letter that he is unfortunately not going to be in the House today for unavoidable reasons, and I appreciate him communicating, saying that he is not going to be in the House. But nevertheless, because they are very important points, I will try to give answers for them. Talking of unemployment, वैसे आपकी उदारता है, संसदीय परंपराओं में जो बोलकर चले जा उपस्थित नहीं हो तो उनका जवाब देना आवश्यक नहीं होता, पर आप उदारता पूर्वक दे रही, धन्यवाद. Because वो information भी मुझे था. अच्छा, उनको जानकारी जी जी धन्यवाद, ठीक है. I've conceded that, sir. No, I've conceded that. Sir,
he had asked a question saying, the PLFS data has been released. The PLFS has said that unemployment rate is 3.2%. The same PLFS says youth unemployment is 10.2%. And the same PLFS says unemployment among graduates is 13%. So his question was, then how does PLFS conclude that unemployment rate is 3.2%? I have a bit of a discomfort, sir, in that it will be untypical of me to answer the way I'm answering, but I will do it with due deference. The blunt point is, sir, they are subsets and the lot are different lots. They don't sum up to become the average, which will have to be something else. You're comparing apples with oranges and then clubbing all the three and say, but how come it is 3.2%? The former finance minister, I'm sure, and I want to say this on record, is aware of it, but he still threw that question at me. With due respects, I want to tell him that 3.2 is the overall unemployment rate for the entire population. Whereas when you're talking of youth, it is a subset within which they are calculating the total. We need to improve in each one of them, there's no doubt. But to think that these did not add up to give a mean average is wrong. They are different sets. So I leave it there. I would think, oh, I'm surprised to hear that from former finance minister. I'm not saying that, but yes, surprises me. Sir, he also raised a question. What is the difference between new employment generation scheme and the PM employment generation scheme, that is PMEGP? Again, they are definitely different. Why are they different, sir? The new employment generation scheme, which was announced in the July budget, had 3 different schemes within it. One which will take care of first-time job seekers, for whom there is a particular scheme, the particular provision which is given, the first-time job seeker will be given this much if his moment taken in, and so on. And a scheme B within that set of 3 is job creation in manufacturing, where we incentivize for the employer additional employment that he will bring, either of first-timer or of somebody who's moving from one job to another. So this is linked to employment, and first-time employees were much more given that kind of an attention. An incentive will be provided at specified scale directly to both the employee and the employer through the EPFO route, so it is registered, it's transparent, everyone can see how much is going to which employer for which employee that he brought in additionally. And that scheme will last for 4 years. So for 4 years, if the same employee continues with the new employee company, continues with the employer, the incentive keeps flowing. So that's a second one. And a third one is to support employers, where all additional employment within a salary limit of 1 lakh per month will be counted, and the government will reimburse employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. So the new employment generation scheme had these 3 distinct employment creating schemes. Whereas PM Employment Generation Program, PMEGP, is one of the flagship programs of the Ministry of Small and Medium Enterprises, MSME. It assists prospective entrepreneurs in setting up of new micro enterprises, particularly in the non-farm sector, for generating employment by providing margin money and subsidy to the bank loan. So the character, the nature, the purpose, and the method of PMEGP is this, and the PM's new scheme of employments, which are 3 distinct.
So as a basket, the 3 distinct versus the PM Employment Guarantee Program are totally two different things. So the difference between the two is what came as a question. This is what I would want to give as answer. So there was also this question about high inflation, food inflation, asked by several members, former finance minister, and several other members who joined in as well. So as per the data released yesterday, the CPI inflation for January 25 fell to 4.31% from 5.22%. This is now closer to the lower end of RBI's inflation target, which is in the range of 4%. So the steep correction, particularly in tomato, onion, and potato prices, actually these 3 are key components in the CPI food basket. And additionally, decline in pulses inflation supported by tariff-free imports. For the pulses that we don't produce adequately for our consumption, we import, but we made a conscious policy of removing the tariff when the import comes in so that we don't add to the price of the landed pulses. So as per the RBI's report on 7th February, sir, CPI inflation for 25-26 is projected to be lower at 4.2% only. So food inflation, which gets triggered when you have an adverse weather condition, and supply chain disruptions are being managed by a group of ministers who are ensuring that timely import happens if there is a shortfall in the supply. So as a result, I think with the first advanced estimates on agricultural production, 24-25 being what it is, Kharif food grain production is expected to be at 5.7%. So the production of rice and tur dal is expected to increase by 5.9% and 2.5% respectively compared to 23-24. So the prices of food will be well under the inflation radar is the kind of advanced estimates which we are getting. But despite that, the group of ministers will be keenly monitoring. So what did this budget do, the current budget which is waiting for clearance? In 100 districts where agricultural productivity is really low, we have come up with a scheme called PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that agri activities are given impetus, productivity is increased, so that more produce come into the market. Many other things are also added in it. Atmanirbharta for pulses, so that we grow as much and more of pulses, of all variety of pulses that we consume in this country. Then comprehensive program for vegetables and fruits, so that supply remains abundant. And a national mission for high-yielding seeds are also brought in, so that production of high-yielding seeds will result in greater agricultural produce in the market. So I have expanded and explained about how governments attempt to get subsidized dal, subsidized rice, subsidized atta come into the market in the name of Bharat Chana Dal, Bharat Atta. I just want to say how much is already sold in the market. And that selling is going to help because if you look at totally between the phase 1 and phase 2, Bharat Chana Dal, 13.8 lakh tons are already sold. Bharat Atta, 16.0 lakh tons are already sold. Rice, 15.3 lakh tons are already sold. So with Chana whole, moong, dal, and so on. So it is clear that government's attempt to remove the stress of price rise is actually being received in the ground. The efforts will continue. We shall make sure that price should not be a burden on the ordinary citizens. We shall support this subsidized atta, wheat, and rice, and chana dal, and so on. So inflation management, again, I think we have made sure that we are addressing the problem. I'm not getting into a comparison game because by now it is very clear who manages inflation a lot more in time and who doesn't. So the depreciation of the rupee
was also something which very many members spoke about. I want to spend a minute on it. Many of the members are still here who have been talking about it. The value of the Indian rupee, sir, is influenced by several factors which I'm sure honorable members know about it. Those factors are the movement of the dollars, the index of the dollar, trends in capital flows, level of interest rates, movement in crude prices, current account deficit, so on, so many of them. Quarter 4 of 2024 certainly witnessed extensive currency-related volatility across major countries, not just India. So Indian rupee, like other Asian currencies, depreciated against the US dollar on account of uncertainty pervading the global macro economy. US dollar index rose to 6.5% during October 21, 2024 to January 27, 2025. Major Asian currencies such as the Korean won, Indonesian rupiah, Malaysian ringgit depreciated by 8.1%, 6.4% and 5.9% respectively. G10 currencies also depreciated during this period by more than 5.5%. For instance, the Japanese yen, British pound and euro depreciated by 7.0%, 6.6% and 5.8% respectively. So the government, we believe that overvalued currencies erode national competitiveness as exports become expensive and domestic companies will have to be given support. So I would like to allay the concerns or apprehensions of the honorable members on account of INR fluctuation. The government and RBI will continue to exercise necessary vigil. So RBI's efforts in making sure the Indian rupee is stabilized are several. I wouldn't want to take the House's time on it, but these are details which I lay on the table. Any honorable members who want to see it can go into the details of how RBI is constantly keeping a watch on the volatility of Indian rupee. So there was an interesting question raised by the former finance minister. Reduction of external affairs budget. In fact, he started his debate participation by talking about that at the outset. Made me feel that why would he want to start talking on external affairs rather than talking about many other finance ministry related specifics. But he wanted to ask as to reduction on external affairs budget. Are we reducing India's global presence was his question, sir. I was a bit surprised by this. The total expenditure of Ministry of External Affairs in 23-24 was about 28,914 crores. It included 8,193 crore for payment to Exim Bank. And why would it include payment to Exim Bank? Because Exim Bank was almost compelled towards invoking guarantees against doubtful debts. Exim Bank supports a lot of activity overseas, and in the instance of the payments not coming in time, they will have to invoke guarantee. So that guarantee being invoked by Exim Bank will have to be filled up by the government, and therefore 8,193 crore was given in the year 23-24. That thankfully didn't have to be given again. So to that extent, the amount has come down. So that doesn't mean external affairs' budget has come down, but that unique situation, not very fortunate, but unique situation which arose, where guarantees being invoked had to be supported because of bad debts outside. It could be a line of credit which given to some country which is in distress, whatever. That doesn't get repeated.
So to that extent, this year's allocation to Ministry of External Affairs does not include that amount. So the 24-25 External Affairs is about 25 to 77 crores, which also includes 4,383 crore for payment to Exim Bank towards guarantees invoked against doubtful debts. 23-24 had it, 24-25 had it, but 24-25 had half of what was given earlier, 8,100, 4,300. As a result, if the amount provided for payment to Exim Bank towards guarantees invoked against doubtful debt is excluded, if it is excluded, core expenditure or budgetary provision of MEA in 23-24 and RE 24-25 is 20,721 crore and 20,984 crore respectively. So there is no reduction for MEA. And just as a matter of detail, sir, the total amount received from Government of India during 22-23 to 23-24 aggregated, as I said, 8,191 crore. Of the above 8,000 odd crores, an amount aggregating to 7,160 crore, that is 87% of it, pertains to LOCs extended prior to May 2014. They were extended at that time. We are like, sir, you're a Hindi scholar. I don't want to risk my Hindi. Bhugat bogi. What do you say? Booked bogi. We are booked bogi of what happened prior to May 2014. Sir, also one question which was raised by many other members was about food subsidy. Food subsidy, sir. Provision made under food subsidy 25-26 is realistic and it factors reduced costs on account of the gains accruing from equity infusion made by Government of India for Food Corporation of India. 11,000 crores was infused into FCI in 23-24. As a result, the provision reflects that and rationalizes to that extent. So this has helped actually in that it helps reduce its short-term borrowing, and that has to be kept in mind, sir. So infusion has helped. Fertilizer subsidies, sir, 2024-25, 1.64 lakh crores was given. It has been increased to 1.68 lakh crore for 25-26. So no, we have not reduced. And let us also recall that in the Purvanchal area, sir, 3 urea factories which were lying idle have been revived because of Purvanchal. Purvodaya, which is a big point which Honorable Prime Minister believes in and wants to revive the eastern region. And 3 of them are all in the eastern region. Now to add further, this budget has restored Namrup in Assam so that 12.7 lakh metric tons of urea can be produced, and that can also add to our fertilizer urea availability and a reduction in the imports. So these are steps taken one by one with a conscious attempt to make sure the eastern region can grow and grow well. So I'm not sure if facts of these questions which have been raised by many members have not been answered earlier. Maybe they were answered earlier. But I'd like to just highlight some of the issues where, is it a Bihar bonanza budget? Is it a budget only for one state? Does it mean that no other state gets anything? It's repeatedly been asked, and I've been answering this. So I just want to highlight, and also the question that you have not consulted the states before getting this budget. Not true at all, sir. Every year before the budget is made, all finance ministers from states spend a whole day talking about what are the states' priorities. We listen to them patiently and also include them in our budget-making process.
And I already expanded on the point that 1.5 lakh crore is the amount that we have now made provision for capital assets for states. So regional imbalances and infrastructure gap, PM Gati Shakti actually tells you where the gap is for which infrastructure program, and therefore we are able to fund them better. And regional imbalances are also being addressed. I already said 25.01 lakh crores is what is being projected to be given in the year 25-26. So, whether it's Bihar or only BJP states, it's just an unfounded allegation. I want to dispel that thought from the members. I'll give you the details, sir. Punjab, Shri Nitin Gadkari ji has informed the Rajya Sabha in December itself that 38 national highway projects were sanctioned in the last 3 years for Punjab, and for the development of 825 kilometers of roads amounting to 22,160 crore only for Punjab. Telangana, sir. Kakatiya Mega Textile Park in Warangal, announced as PM Mitra Mega Textiles Park. In August 2024, Union Cabinet approved industrial node in Zahirabad under the National Industrial Corridor Development Program. These are two major big-ticket items being done for Telangana. Please, sir, please, back. The Jharkhand, no, sir. Please, no. In Jharkhand. No. Please, बैठ कर. Not going on record. Renuka ji, बैठ जाए. Not going on record. Please, not permitted. Please, no. Sir, let me hear it, sir. Please, please, take it. Honorable Finance Minister, please speak. Please. Please. बीच में बिना चेयर की अनुमति के ना बोले. Please, no. Please. So what was it, sir? So what is that question, sir? I'm quite willing to answer. What is that question, sir? So let me hear it, sir. It's related. It's related Reorganization Act compensation. Sir, AP Reorganization Act and what has been given to Telangana, as much as I'm sure the other side of the AP Reorganization Act will immediately get up and say, what have you given us? I'm willing to answer every question on that. AP Reorganization Act, as to what has been given in particular for Telangana, I'm willing to spend a few minutes on it, as much as I would probably now or a bit later mention, and probably I will say this one line at the beginning, whether it is this party or that party, doesn't matter. I'm talking on behalf of the state Telangana, people Telangana, as much as all of us want to talk. At the time of reorganization, post the Reorganization Act getting passed, Telangana was revenue surplus. Today, it is, I'm sorry to say, I'm not picking on any one state. Every state has its issues. But today, the debt that Telangana is in, despite the measures taken by the central government, I will read this out, and I'm not blaming this party or that party, I repeat. But AP Reorganization Act, and to that extent Telangana, what it should get. I will point by point say, some of which I'll say with your permission, sir. I mentioned about Kakatiya Mega Textile Park, Zahirabad as a corridor nodal point, then Samakka Saraka Central Tribal University, part of the Reorganization Act. The foundation stone also has been laid for AIMS in BB Nagar, close to Warangal. Roadways, 2,605 kilometers of national highway constructed in Telangana since 2014, AP Reorganization Act ke baad. 4 greenfield corridors being built under Bharatmala project in Telangana. Railways,
record railway budget allocation of 5,337 crores. Since June 2024, Union Cabinet approved new lines between Erupalam and Namburu and between Malkangiri and Pandurangapuram. Constructed 753 kilometers of new tracks in Telangana since 2014. 5 Vande Bharat trains introduced and started from Telangana. 40 railway stations being redeveloped for Telangana. Social infrastructure, sir. Over 2 lakh houses being built under PM Awas Urban, completed. 31 lakh household toilets constructed under Swachh Bharat mission. 38 lakh tap water connections provided under Jal Jeevan mission, Telangana. 82 lakh Ayushman cards provided. 199 Jan Aushadhi Kendras operationalized. 1.2 lakh Jan Dhan accounts opened. And over 75 lakh Mudra accounts sanctioned. Please. Let Honorable Finance Minister conclude her speech, please. No, it's not open discussion. No, please. Jharkhand, it is a please take your very gentleman. Please, madam, take you. She has replied in detail. No. बहुत विस्तार से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया है. अब नो डिस्कशन फर्दर. नो, लेट हर स्पीक. I've added one more, sir. आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. I'd like to add one more, sir. Telangana, for the 9 districts, which is the backward districts, as per the Reorganization Act, 50 crores for each district, which is 450 crores into 6 installments. Total of 2,700 crores provided for this backward district development for 9 districts, all Telangana. Please. Please. Let Honorable Finance Minister continue, please. Sir, Dr. Lakshman from Telangana is right in saying that. I forgot it. Srimati Indira Gandhi had contested from Medak district, Medak constituency. All right, sir. She won from Medak, represented that constituency. But who has given the first railway station for Medak? Prime Minister Modi. Sir, Telangana throbs for Ramagundam, sir. Very important. Very important. Who has helped revive that Ramagundam, sir, for Telangana? Prime Minister Modi. So, the capacity of Ramagundam, sir, after the revival is 12.7 lakh metric tons. Also for the record. So, no state. Please take your. No, she has replied in detail. I'm not allowed you, madam. You're a very senior man. Please take your seat. No. आप सभी बैठिए. Sir, no state has been ignored under Prime Minister Modi. Yes, you all sit. No point getting angry, sir. Yes. A point raised, point answered. Yes. You want more? Please continue. Please. Sir, Sir, the point is... Please take your seat. Renuka ji, please take your seat. Renuka ji, please. आपस में बात नहीं, please. Please. Renuka ji, please. Sir. Dr. Lakshman, please. Sir, kindly.
Sir, actually, I kept reading only some of the main things. Yes. But more for the sentiment of Telangana, sir. More for the sentiment of Telangana, sir. Just as Ramagundam, just as Sammaka, Saraka, these are very big sentimental and right points for Telangana. One other right point for Telangana, sir, I missed out on saying, I seek your indulgence. Turmeric which is produced in Telangana is one of the classiest turmeric. One of the very good quality turmeric and produced in Telangana. Who gave the turmeric board? Located in Nizamabad, Prime Minister Modi, sir. With due respect to the honorable member who is feeling so charged about Telangana, we are here also equally charged for Telangana, but we show it in action and not by just raising the questions. So, for every question that is asked, sir, because it's an emotional issue, we are also responding by action rather than keep raising the issue. We are showing action. Sir, Jharkhand, in October 2023, the Union Cabinet sanctioned the North Koil Reservoir project at a revised cost estimate of 2,430.76 crore, and that is for Jharkhand. So this budget is not for Bihar, this budget is not only for BJP states, every state is getting their right due. There is nothing that I'm saying, oh, we are giving. No, states deserve to get it, they will get it, they are getting. Please, Rajiv ji, not all. Please take your seat. Rajiv ji, बैठ जाए माननीय मंत्री. Sir. प्लीज, माननीय रेणुका जी अपनी सीट पर बैठे हैं, आपस में बात नहीं. कोई बात आप सबकी रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. माननीय रेणुका जी, प्लीज टेक योर सीट. प्लीज टेक योर सीट. Sir, I'd like to respond to one of the points which former finance minister raised, and that was also raised by Honorable Member Tirchi Siva, also raised by Honorable Member Saket Gokhale, and also raised by Raghunath Reddy from Telangana. No, from Andhra, sorry. Saying you have given a certain projection for direct tax collection, but having foregone 1 lakh crore in the name of the tax relief that we've given up to 12 lakh rupees salary or income, how is that number right? It's a question which has been asked, and I think it's a very important question for which answers should be given, sir. It's not a mistake, or we have not just deliberately just put a number. I'll explain how mind has been applied, and the Department of Revenue has really looked into the details and only then come with the number. And if anything, in the last 5 years, our budget estimates have been commented upon by many observers who say yours is a very conservative estimate. Even for them, I had just said then and now, ours is not conservative, it is realistic. We don't overestimate, we are realistic. So even this year, when we have given the number for revenue buoyancy, the number is realistic. And I'll tell you why, sir. Yeah. Please. No, I'll tell you. John Brittaji, no comment, please. No. John Brittaji, no comment, please. We'll answer it. Please take your seat. Nothing is going on record. Nothing is going on. Sir, taxes on income, sir, is a broad category. It includes individuals and tax-paying entities other than companies under the Income Tax Act of 1961. So it also includes securities transaction tax. But in the BE 2526,
taxes on income, if you exclude security transaction tax, is estimated to at 13.60 lakh crore. This represents a growth of 13.1% over 24-25 RE, which implies a buoyancy of 1.30. Sir, if you were to look at the buoyancy, this buoyancy is lower than the average buoyancy of 1.74, which is obtained in the last 5 years, which ends in 23-24. If I were to take the 5 years ending 23-24, the buoyancy was 1.74. What we are now saying for this year is 1.30. And if I were to look at not 5 years past, but only 3 years past, the buoyancy was 1.94. So 3 years average 1.94, 5 years average 1.74, but what we are giving now is only 1.30. So there is no way in which we have done any calculation error, and therefore, even as I explained this, sir, that misunderstanding which, say, John Brittas would have in his mind, Honorable Member John Brittas would have in his mind, is, for instance, the effective tax rate across different categories of taxpayers for the year 22-23 is as follows, sir. Individuals was 12.2%, effective tax rate. Corporation tax on companies, and when I say 22-23, it's 3 years after the 2019 reduction of corporate tax. Corporate tax on companies, the effective tax rate was still 23.2, lesser than 23.2, which is lesser than the individual tax rate. So we can go on saying we've given a bonanza to the companies, look what's happening. The effective tax rate on companies is 23.2. Together with this explanation, sir, on the tax, I also want to pick up on this one comment which the former finance minister made. He said, how the net tax to center can grow by 11.1% when government has given 1 lakh crore of tax concession. The same point which was mentioned in a different way. Sir, he also said, it seems pure magic. It is pure magic, not mathematics. I'm sorry, it is pure mathematics. It is pure mathematics that we have done what we have done, and I'll say why we have done that. The net tax revenue of the center is derived after deducting tax devolution to states from the gross tax revenue. The gross tax revenue for the year 25-26, the budget estimate, is estimated to grow by 10.8%. So the tax devolution to states in the RE of 24-25, the year in which we are still on, includes an additional tax devolution from the union government to the states, which is one-time tax devolution, of 12,764 crores on account of prior period adjustments which are required to be done. So if this adjustment amount is excluded, then the tax devolution to the states in the year 25-26, the forthcoming year, is 11.5%, higher than the RE 24-25. So what will be the net tax to center, sir? Meaning, what will be that amount which center will be retaining for itself, sir? Is only 10.4%. So the estimation is both, net to center is both realistic, and also it factors the interests of our states. So I would want to inform the former finance minister that it's not magic, it's pure mathematics. I've explained about these buoyancies, sir. There was this question about tax cuts benefit not only the middle class, but also the rich. Again, former finance minister said, oh, you have not just done for middle class, it's going to benefit even the rich.
And that is a point on which Honorable Member John Brittas will also be keen to know, have I favored the rich? Please. Please, please. You have already raised your points. Yes, put your question. She projected an amount on corporate tax. She got 40,000 crores less. But whereas she's projecting 14.8% growth in personal income tax, despite giving a giveaway of 1 lakh crore. That was the question which was raised. Even then, now, for 25-26, her growth rate in corporate and GST is hardly 10%. How is it? That was the question. Thank you. I thought I've answered one part of his question, sir, and I'll further answer through this response on the point that former finance minister raised. He said, therefore, your claim that you're only benefiting the middle class is not really completely correct, because it's the measures that you've taken is going to benefit the rich also. I'm sorry, he's wrong. Tax rates for different bands of income has also been reduced, which is a truth. But what does it benefit, and by how much does it benefit the middle class as opposed to by how much does it benefit the higher income groups? I'll just give you a figure, sir. We are all aware that in this budget we've said up to 12 lakh rupees nil tax, which is 100% relief for those earning 12 lakhs or less, sir. 100%. Please, no. Then, I'll give you no the intervention, so please. Middle class, so up to 12 lakh, okay? Which was already mentioned, but I'll tell you later. 24 lakhs. Taxable income in proposed new regime, suppose it's 24 lakhs, sir. Total income tax is in the proposed new income tax for that group will be 3 lakh. The relief in comparison to the present regime is only 1,10,000 crores, 1,10,000, which is 26.82%, meaning SSC will be paying 26.82% lesser than the tax that he had paid earlier. So on that note, in that way, I'll explain what happens for 50 lakh. 9.24% is the SSC will be paying lesser by. The new tax regime coming in will make somebody who's earning 50 lakh to pay only 9.24 lesser than what he was paying earlier. What if he's earning 1 crore? He'll pay only 4.08% lesser than what he's paying. 100 crore, 0.037% only lesser than what he was paying earlier. 250 crores, 0.015% only lesser than what he was paying earlier. If it is 500 crores, sir, he pays 0.007% only lesser than what he is paying now. So have we benefited the rich, or is it for the middle class? 100% lesser you're paying, meaning you pay no tax, is better than 0.007% lesser than what you're paying earlier? Please. That's a good question. Sir, as I'm responding, sir, as I'm responding, and I'm not skirting any issue, the question which is coming in the mind of Honorable MP Minister is the way in which questions are being asked on this. He's right, makes us feel that they probably are against this tax benefit which are being given to the middle class. I think they should say it, that they're opposed to this.
seat. Please take your seat, Gupta ji. Please take your seat. John Britas ji, no, not allowed. No, please. No. No, no, no. Sir. Please. No, John Britas ji, take your nothing cut, going on record. No cut. Sirs finance minister की बात ही जा रही है record पे, please. I yielded, I gave an answer, you will never be happy. She has already yielded. Please, no more. Sir, no cut has been made in capital allocation, which has been explained repeatedly. But I was again surprised to hear from the former finance minister saying fiscal deficit has been achieved by cutting capital expenditure. Capex has been cut by 1.8 lakh crore. Thus, she saved on the fiscal target by 43,785 crore. Is it a good policy? I don't know. Is it good? Is it a good economy? I say no. And left it there saying you have managed to have fiscal deficit contained because you cut down on your capital expenditure. I have repeatedly said, sir, capital expenditure has not been cut down. Actually, the total effective capital expenditure is proposed to be 15.48 lakh crore, which is 4.3% of our GDP. So the 11.11 lakh crore of the vote on account budget and July budget is now gone up to 11.21 lakh crore, which is 3.1% of our GDP for capital expenditure. So where have I cut down? I haven't. Sir, it's a good augury that the former finance minister has really appreciated and realized the importance of the capital expenditure. And so, at least I'm glad that he realizes that capital expenditure has greater multiplier and it is good for the economy, it is necessary to undertake it, and his concern that are we cutting down is well appreciated, and I want to assure, no, we are not cutting down. But that concern may be well worth for him to counsel some of his own party-ruled states, whether it is Karnataka, whether it is Telangana. Spend on capital expenditure, please. Tell them also. Tell them also. But their capital expenditure monies are coming down. Congress-ruled states are no longer spending their own money on capital expenditure. We are giving, we will continue to give. So, former finance minister, may I request him, in his absence, that he should counsel Congress-ruled states to also spend on capital expenditure. Sir, I don't want to get into data to say during UPA this what happened, but one data is very important, sir. Under the UPA, capital expenditure as percent of total expenditure, excluding interest payments, became half, meaning it was halved by 31%, from 31% in 2004 when Atal Bihari Vajpayee ji left. 31% it was. It was brought down to 16% when UPA left in 2014. Where is 31%, sir, capital expenditure? And where is 16%? Appreciating capital expenditure, at least there aaye, durust aaye, at least now. At least now you have understood. Sir, Sir, also former finance minister said, the chief economic advisor says, get out of the way. In response, the FM in the budget announces 7 new schemes, 8 new missions, and 4 new funds. Meaning, the chief economic advisor has told you to get out of the way, whereas you are coming up with more schemes. Sir, people of India have made them get out of government. People of India have made them to get out of governance itself. And more importantly, if you take back to 1947, Mahatma Gandhi said to the Congress party, get out of politics. You got disbanded. Get out is for them, sir. They should disband the party. Gandhi said, please, you don't need to be in politics. Get out of politics. But no, they're still lingering in India's political domain. So, from our side, I want to say getting out is something which Honorable Prime Minister has been repeatedly saying, I don't want red tape.
I want red carpet for industry. I'll remove archaic laws. 1,550 obsolete laws have been removed. 40,000 unnecessary compliances have been removed. And also decriminalization has happened for 3,400 offenses where people would have been put in jail. We've removed those clauses. We are certainly getting out, and the CEA reminds and shows many things. That the chief economic advisor is independent and does say things for all the country. I want the state governments also to follow this route of remove archaic laws. Get out, get out, get out. I wish the former finance minister tells the Congress governments to please get out of the way. You don't disturb people. They want to be entrepreneurs. They want to grow. They want to. So, Jan Vishwas bill were brought by us. We removed the angel tax so that the startups can function. And the notorious retrospective act which was brought during UPA was removed by Honorable Prime Minister, sir, which was a regressive act. Yes. Sir, the last point, sir, before I have two specific responses for two members who spoke much later than when I left this place. Sir, former finance minister. Please. Please listen. No comments from. There's just one point which we can repeatedly remind ourselves. I'll say that. About Kerala. No. About Kerala. No. About Kerala. Sir, this is former finance minister. There is a government, but there is little governance. There is no philosophy, so there is no policy. I'm urging FM to recapture the wisdom and far-sightedness of Dr. Manmohan Singh. Former finance minister said, I listened to him carefully. Philosophy, vision, if that was the way in which 1991 opening happened of the Indian economy, sir. Within 6 months, they gave up all the conditions which were put on India for the opening of the Indian economy. And they just forgot reforms after that. So vision was there, but it remained in paper. And not till Atal Bihari Vajpayee came has the momentum on getting reforms done, get your roads built for the country, rapidly change the nature in which businesses are done, started happening. And after that, 10 years after that, again, 10 years remained lull. Once in 2014, we started all over again, reforms are happening. So vision was there, whether under compulsion or otherwise, you opened up the Indian economy, but it didn't persist. But it was a brilliant government, brilliant budget, right? Made history, no doubt. I don't know if there's a connection, but I want to just put on the table here. It was from that government that the former finance minister resigned. Whether he resigned on his own account or was asked to go. If that was a government about which he's telling us, oh, it was a brilliant government, it had vision, it had this. Sir, you resigned from it. I want to believe you resigned. Or were you asked to go? But he came back to it. All right. So, never mind, you can defend. But he did leave it. And then he went to three different parties. He went to even a regional party, TMC. He went to a regional party, Tamil Manila Congress. And then there. So, such a great government about which I'm being told, oh, you should remember it had vision. Arey, you couldn't have left that visionary government then. You left, sir. You left. Sir, two things, sir. Two things. I'll come to Kerala, certainly. Jaya Bachchan ji, honorable member, spoke passionately about how the film industry is being neglected. And also, she said,
leave aside the GST, all single screen theaters are shutting down. People are not going to movie halls. There is no cut in the entertainment tax and so on. For the benefit of all honorable members, I just want to explain this a bit. There is no entertainment tax levied by the union government. First thing clear. Second, entertainment tax previously levied by state governments has been subsumed under the GST, correct? Then, Constitution still allows the state governments to make laws with respect to taxes on entertainment and amusements to the extent levied by and collected by the panchayats and municipalities. This is some entry 62 in list 2 of the 7th schedule. Regional councils or district councils can also levy. So, these levy of taxes on entertainment and amusement is by the local bodies, which is a state subject. There is no central jurisdiction on it. So no question of will you increase, will you reduce, none of that is with me. Sir, then, before the GST, the tax on entertainment services averaged around 30%. Movie tickets attracted various entertainment tax, while a combined 20.5% VAT and service tax applied on it, also to apply to food and beverages at the theaters. Some states had entertainment tax as high as 100%. Now, the service of food and beverages in the movie theater attracts merely 5% GST. Only 5% GST is levied in the theater, food stalls, or even the notorious, now famous popcorn. Only 5% is levied. Sir, multiple GST council meetings have discussed, and I can give you the dates, 19th May 2017, 11th June 2017, 22 December 2018, for reducing taxes on movie tickets, the GST. In 2018, a decision was taken that for rupee 100 or above rupees 100, only 18% will be charged. It was 28% earlier. For movie tickets below 100 rupees, only 12% GST will be applied. Before it was 18%. So reduction is what the GST has done for the movie tickets. Then, Honorable Member Jaya Bachchan ji said, we do not believe in just photo ops with film stars. We work for the development of entire media and entertainment sector, which includes, she said some things. Sir, I want to say, for all those, we give respect to everybody. One of the major steps taken by this government, Cabinet has recently approved, is Waves 2025. India will host, for the first time, World Audio Visual Entertainment Summit called Waves in Mumbai between 1st and the 4th of May 2025. It will bring together from all over the world media CEOs, entertainment icons, creative minds from all over the globe. And the summit aims to position India as a global hub for media and entertainment, offering unparalleled opportunities for collaboration and showcasing Indian talent. So I want Honorable Member Jaya Bachchan ji to know we have not forgotten. We are on the contrary lifting it to such a level where all states can display their talents, and the movie industry or the the audio-visual capacities that they have can also be displayed. So September 2024, Cabinet also approved establishment of the National Center for Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality. That's also been already cleared by the Cabinet. Government has facilitated the signing of co-production treaties of India with 15 different countries so that co-producing of films will be possible. And for facilitating shooting in India of films, a single window clearance mechanism has also been created with the Film Facilitation Office. So we have not forgotten the film industry.
Also, PM Modi has in his Man Ki Baat also spoken about the 100th birth anniversary of several iconic figures. In the last Man Ki Baat, he spoke about 4 cinematic legends, Raj Kapoor, Mohammad Rafi, Akineni Nageshwara Rao, and Tapan Sinha, have all been remembered for their birth anniversaries and so on. So I find it odd that Honorable Member Jaya Bachchan has expressed her angst about how film industry has not been supported, whereas she will well remember Honorable Member of Parliament today in the Lok Sabha, Kangana Ranaut, under the MVA government, which her alliance supports, in September 2020 in Pali Hill, Mumbai, intimidated her, and in a notice of 24 hours which was given to her, demolition happened. And till the Bombay High Court interfered, the demolition was happening. Honorable Member Jaya Bachchan should be talking to her alliance parties about how film industry is being ignored, how they are being put to suffering. And of course, I don't need to go back to talking about how Hridayanath Mangeshkar, Lata Mangeshkar's brother, could not even work in All India Radio. He was fired out because he was composing and singing not to please the Congress party. And also, Majroor Sultanpuri was jailed in 1949. And Dev Anand was threatened for not supporting the emergency. And Kishore Kumar was also pulled off the air. So about film industry, yes, please, I'll come. Please take your please. So, Honorable nothing is going. Please. Talking about, please. I'll come, sir, Kerala. Please. I will come to Kerala. Hold on. Sir, please. Jayaji also was very worried. No. Let her speak. Jayaji was also worried about film industry. Please. Please. So the lines written by Majroor Sultanpuri. Yeah, please take your seat. I will say. Now, if you go on moving the milepost, myself also. You wanted on Kerala, I'll come back to Kerala. Now you want something else. You can't just go on throwing the gauntlet like that to me. I will take each one of them and answer you. So, sorry, sir. Sir, no good. Everything is so expensive. Was a worry. Honorable Member Jaya Bachchan's worry. I want to say, sir, no poor Jaya. All of you are poor, I am also poor. But the questions are asked will have to be answered, right? Yeah, but so much was said. So much was said. So, sir, when the government is doing so much, I need to take time to answer. Or do you want me to just nominally mention one thing and go away? I will say everything that this government is doing because we are doing that much and more. Sir, if 90 members can speak, and we've heard it all, I will not be allowed 90 minutes to answer? Please. Unbelievable, sir. 90 minutes of answer you don't want? I've heard 90 members, sir. No, please. Sir? Please. She had a concern. People have stopped watching films. No, people have not stopped watching movies. They probably are viewing OTTs. I just want to say how the OTT sector is booming in India. Disney and Hotstar, 400 million active users. Netflix, 3+ million paid subscribers. Amazon Prime Video, 4.4 million paid subscribers. According to a FICCI EY report, sir, OTT market will hit 12.5 billion US dollars by 2030, and already 448 million OTT viewers in India, which is second only to China. That is the growth that India, in regional languages and in Hindi, is having in the OTT sector. So film industry will not have an issue, sir, and the government is quite seized of the kind of sir. And I just want to, one broad reference to, because Honorable Member Raghav Chadda is seated here, I got to know he's a chartered accountant. Sorry, I didn't know earlier, I must confess.
But he said, probably I've forgotten, pardon for that. Please, John Britasik, har waqt mat Because please. repeatedly I don't see the strength of a chartered accountant coming in your in your interventions. So it makes me question, am I really right in thinking you're a chartered accountant? Sir, I want to say, marginal relief, sir. He wouldn't Please take your no, not allowed. Not please. कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. Only finance minister's speech is going on record. No, please. आप बोले. माननीय Honorable Finance Minister, please. Please listen and go to your Finance Minister in Kerala and ask this question about GST. Please. Sir, Honorable Member, if he has a question to clarify on GST, equally and more competent will be the Finance Minister of Kerala to answer. He should seek clarification from him. Sir, no, you've had doubt and I'm ready to answer. But if it's GST, I would equally appeal to you to please contact your Finance Minister and ask him. Sir, about the 12 lakh rupee, I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chaddaji to please kindly not mislead the House. I don't mean he intended it to do. I don't think he intended to mislead the House. But the way he put the whole detail about the personal income tax, which has come in this budget, sir, 25-26, we issued FAQ. Just as soon as I finished my speech, the FAQ was put out. Lots of people who asked the questions have all been comprehensively given explanation. For an honorable member to come to the House and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. You don't need to pay till about 12 lakh 75,000, but you don't end up paying much. 12 lakhs at zero and after 12.75. Please take your seat. Please take. Yes. Please. 12 points, sir, for his understanding. Raghav Chadda, honorable member, kindly indulge me. I will give you number by number. Listen to me. Sir, 12 lakh 10,000. If suppose the person earns more than 12 lakh, that was his core worry. I'm saying, if he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. All right, sir. So is 12 lakh 50,000. What if he earns that much? The tax without marginal relief. Listen, please. Listen, please. Mr. Raghav Chadda, please. You misled the House. At least hear it now. Take your seat. You misled the House. Please take your seat. I am not allowed to. Please take your seat. Sir, if a person earns 12 lakh 50,000, tax without marginal relief for him would have been 67,500 rupees. 67,500. But with marginal relief offered, he will pay only 50,000. Suppose he is earning 12 lakh 70,000 rupees. Without marginal relief, he will pay 70,500. Whereas with marginal relief, he pays 70,000. And it is only when he reaches 12 lakh 75,000, his tax will be 71,250 with or without marginal relief. All right, that is it. What do you expect me to go on till 20,000? So, Raghav Chadda being a chartered accountant, I repeat, is only misleading rather than informing people. And this is put out openly. There's no hide and seek in this. This is put out, the calculation are put out openly. And a chartered accountant keeps repeatedly saying, that's exactly what I'm asking. I'm saying that in written and in oral. What more does he want? I've not hidden anything here. Sir, also, sir, I want to just highlight, sir.
Kerala, before I go off to the other. Kerala, sir, honorable member said you have not said much about Kerala. August 2024, the Union Cabinet approved industrial node in Palakkad. Kerala, Kannur Airport operationalized under RCS Udan scheme. Site clearance granted for construction of Greenfield Airport at Kottayam. Please, 1,300 kilometers of national highway constructed in Kerala in 2014, since 2014. 1,126 kilometers of national highway corridors being developed under Bharatmala Pariyojana in Kerala. Sir, I will continue, but the problem is they will say you have not said anything about Kerala. The moment I start reading the list, then they'll shout me down. Is this fair, sir? Metro, India's first water metro inaugurated by Prime Minister Modi in April 2023. Kochi Metro inaugurated by Prime Minister Modi in 2017. 25-kilometer metro rail operationalized since 2014. Record railway budget allocation of 3,042 crores for Kerala. 125 kilometers of new tracks constructed in Kerala since 2014. 2 Vande Bharat trains started. 35 railway stations being redeveloped. Social infrastructure, sir. 1.6 lakh houses built under PM Awas. 2.5 lakh household toilets constructed under Swachh Bharat Mission. 21 lakh tap water connections provided under Jal Jeevan Mission. 82 lakh Ayushman cards provided. 1,500 Jan Aushadhi Kendras operationalized. 66 lakh Jan Dhan accounts opened. 1.6 crore Mudra accounts sanctioned. That's for Kerala. Vidwan Betasi, take your seat. Not going on record, please. Sir, I'll come to talking about, sir, this, sir, Bengal denied its due share. Bengal denied its due share. Please take your seat, Mr. John Vikas. All the members are standing. I'm requesting you, please take your seat. Being peddled about imagined discrimination against West Bengal. West Bengal, yes. Sir, like every other state, PM Awas Yojana Gramin is being implemented in West Bengal since 2016-17. The government has released 25,798 crore as central share to the state since 2016-17. However, complaints of irregularities in the implementation of PM Awas Yojana, including a selection of ineligible households for Awas Plus 2018 list, removal of eligible households, branding violations were received. Similar things have happened about Manrega also. Sir, the people of Bengal are survivors, and I'm sure they will get over the obstruction which has been imposed by the party. But on the specific counts, sir, please, the specific issue which was raised by Shri Saket Gokhale, the union government allocated 172 crore to Andhra Pradesh, 147 crore to Bihar, 151 crore to Gujarat, 200 crore to Madhya Pradesh, 154 crore to Uttar Pradesh for tourism projects, according to an official statement in Lok Sabha. Sir, this was raised, and I will give you a point of order, please. And he also further said, not a single rupee was given to West Bengal. Moreover, the center has not even included any tourism site from Bengal in these schemes. It was said during the question hour. And I quote Minister Gajendra Singh Shekhawat's response here.
And this is emblematic of the issue between the members who think Bengal is not receiving and the government which is saying repeatedly, here we go, the facts. And what was Gajendra Singh Shekhawat's facts, sir? He said, we reached out to the government of West Bengal 4 times in writing and even spoke personally to its representatives, requesting them to submit project proposals. Despite our repeated efforts, no proposal was ever sent by the state. So, the center, Gajendra Singh Shekhawat said, the center isn't showing any stepmotherly treatment. If anything, it seems West Bengal's own administration is failing to act. So, I want Bengal also to know that there is no Madam Finance discrimination. Minister, here is a point of order. Can you see? Please, Derek ji. Mr. Derek O'Brien, your point of order. Point number. Rule. Within the rules. Yes. Which rule? Within the rules. Let me finish. Let me finish. I'm going ahead. Within the rules. Sir, with your permission, please. If there is no rule, I'm going ahead. With your permission, sir. Within if there is the no rules rule, of 239, sir. The point of objection being raised. If there is no rule, with your permission, I want to go ahead. 1 minute. 239. Sir, within the rules I was asking for the last 3 minutes. Please. Now you've given me 239. Yes. 239 is the rule. I'll just bring it to your notice. When for the purposes of explanation during discussion or for any sufficient reason, no, let me read it. Any member has occasion to ask a question of another member on any matter under the consideration of the council, he shall ask the question through the chairman. That's the rule. Besides this rule, I have on 322 on my computer, 322, referring to a chairman's ruling, debate state matters. That is my ruling, sir. Please pull out 322 on your computer and I'm asking the question. State matters. Without prior notice, I'm reading, nothing should be said derogatory about a state government. That is a rule. No, sir. Wait, that's a ruling. That's a ruling. Now my question. Please. Sir, 239, my question. Yes. I have a pointed question to the finance minister. Pointed question. Yes. Pointed question. Please. 7,000. Please. Pointed question. You answer me yes or no. 7,500 crores owed to Manrega for Bengal. 99.2 compliance has been met. Where is the money for Manrega and Awas Yojana? Where is the money for Manrega and Awas Yojana? No, don't mislead the House. No. Don't tell us about who came on Monday. Nothing is going on record. Please take your seat. Sir. Please, no point of view. Please. Sit. Please. Sir. Honorable leader of the House, Mani, please. Sir, nothing derogatory against any state government has been said. Yes. They are trying to politicize the issue. You raise issues, and you try to give an impression that something injustice is being done to a state. And the national and the union. Please take your seat. आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं Is this a fish market? Are you making it a fish market? Are you making a fish market now? You don't have even the decency. You don't have even the decency to hear. Yes, please. Here, you have got only the मर्यादा के साथ एक दूसरे से बात करो. only one thing to put charges. Please. Sir, yes, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है. Please. Nothing derogatory has been said against any state government. Right. Number one. Number two, they have raised issues that they are not getting justice to the respective states. The Union Finance Minister is answering one by one the issue how Government of India and Modi government has given more than justice to their states and how the corrupt government of West Bengal is not responding to the fiscal laws and rules. That is what she is trying to say. And now, Mr. Chairman, sir,
I would like to request you that there should not be any point of order and let the Union Finance Minister give the answer incomplete. Please. Thank you, sir. Please. Sir? Let her speak. Nothing is going on record now. Please. Yes, sir. Honorable Finance Minister. There were questions about how our government is probably doing not adequate for MSMEs. I want to very clearly say, in the last 3 budgets, we have repeatedly taken step after step, and in this budget also, many steps have been taken to strengthen MSMEs for accelerated growth of enhanced limiters, enhanced credit limits, So micro and small enterprises have been given credit guarantee cover from 5 crores to 10 crores. Startups, coverage has been done. They are correct. They have not to answer the people of West Bengal. They have to answer their leader Mamata Banerjee, and that is why they are doing all this. Please. Sir, so innovative financial tools have also been brought in for customized credit cards, and the credit card offering is about 5 lakh rupees. Support for first-time entrepreneurs have been given. New term loan scheme has been offered, and up to 2 crores for first-time entrepreneurs for next 5 years, particularly the SCs, STs, and entrepreneurs who will come from those communities. We have given leather and footwear industry enough support so that their businesses can grow. And leather sector also has been given an enhanced importance. Imports for wet blue leather now fully exempt from basic customs duty, so that crushed leather exports freed from a 20% duty to encourage domestic value addition and export. So national manufacturing mission has also been given. EV and mobile production is also being encouraged. The import of several of the critical minerals have also been enabled. So there are very clearly steps from July 24 budget continuing even in this budget. So MSMEs have always received a very important place in our budget making, sir. बचपन में हम लोग देखा करते थे कि क्रिकेट के मैच में जब टीम हारने लगती थी तो विकेट उखाड़ करके चल देती थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि इतने जिम्मेवार पार्टी जो यहाँ हम 90 स्पीकर्स को सुने, उनके एक एक बिंदुओं को ध्यान में लेकर के वित्त मंत्री महोदया तैयारी करें और उसका जवाब दें, और जवाब जब सुनने की हिम्मत ना हो तो विकेट उखाड़ करके चल दें। खुद का विकेट उखाड़ करके चल दें। ये संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। मैं चाहूँगा कि इतनी पुरानी पार्टी, वैसे वो अपने बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन के कारण हर समय उनकी गिरावट बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, और बढ़ने के लिए कम से कम इतना तो ध्यान रखें और मादा रखें कि जब वित्त मंत्री पॉइंट वाइज, और सिर्फ वित्त मंत्री जवाब नहीं देती, दिस इज द आंसर ऑफ द गवर्नमेंट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब वो जवाब देती हैं, द ऑपोजिशन शुड ऑल्सो टेक इट इन दैट वेरी स्पिरिट। थैंक यू। माननीय वित्त मंत्री। Sir, since very senior member Tiruchi Shiva has been saying what about Tamil Nadu, I thought I'd list out whatever has been done for Tamil Nadu. So, with due respect, huh? You want me to sit down? Yes, Tiruchi, first you have to take permission, my permission, sir. Please, yes, please Sir, put your question. Tamil Nadu government has asked for 2 very important metro projects, Madurai and Coimbatore. Nothing has been said. And so also the due for Manarega and SSA is still pending with the union government, has not yet been given.
So also the PMEAO, you said the state government has spent all its due, but the union government has not given what it has to be. Thank you. So at least say something Thank about you. these two very important metro projects. Thank you. Thank you, Honorable Finance Minister. Sir. Please. I wanted to start with something, sir, but I will reserve it for the end. Tamil Nadu, sir. Chennai Metro Rail Project Phase 2 was approved by the Central Sector Project, 63,246 crore, of which 65% will be financed by the central government. Tamil Nadu Defence Industrial Corridor was inaugurated in January 20, 2019, and I've heard different time, different statements, but subject to correction, because I don't keep an account of that, more than 30,000 crore investment has already happened. This has been said by ministers, both of the older dispensation and now of the current dispensation. I don't have the latest number. But when the defense corridor was announced, Prime Minister Modi announced defense corridor, the first corridor for Tamil Nadu. So constantly to think that, oh, Tamil Nadu, UP corridor was announced far later. So Tamil Nadu was top of the priority when it came to defense corridor. PM Mitra Mega Textile Park announced in the aspirational district of Virudhunagar. Foundation stone laid for AIIMS Madurai in 2019. Railways. Yes. Please. No, it's all right. You can always go on moving the milepost. Now you didn't start. No comment while sitting without permission. I will. Then now, I will have to say what I wanted to say at the beginning, which I reserved for keeping outside. It cannot be a narrative where it's only the centre's fault. I want to quote two examples, sir. I want to quote with responsibility two examples. And this consciousness with which they point you on every one detail, where were they? They were an alliance partner with the Congress at that time. Hey, hold on here. You can't stop me like this. I'm sorry. I will say this, sir. I'm answering you. I'm answering you. Now, உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். நீங்க உட்கார்ந்து அமைதியை கேட்க வேண்டியது உங்க கடமை. Sir, they were party and alliance partner. அவ்வளவு கோவம் வந்ததுன்னா தமிழ்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Sir, with your permission, I want to say this in Tamil because there's a member who thinks I'm saying things which are not related. I will say it because it was Prime Minister Modi who, despite a silent partnership and a result which was against the people of Tamil Nadu, Jallikattu was banned in Tamil Nadu when they were partners with Congress. It was Prime Minister Modi who removed it from that list. அப்ப எங்க போனீங்க? அப்ப ஏன் கேட்கல? அப்ப காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஏன் கேட்கல? என்னையா அப்படி பண்றேன்னு ஏன் கேட்கல? So, எப்ப பாரு மோடி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதம் சொல்றது தப்பு. அமைதியா உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கான தைரியம் இருக்கும் உங்களுக்கு. That's one example, sir. Second example I will say, sir. அமைதியா உட்கார்ந்து கேளுங்க. தைரியம் வச்சுட்டு அந்த மனசுல திடமா இருங்க. மனசுல திடத்தோட தமிழ பதில் சொல்றேன், கேட்டுக்கிட்டு போங்க. அங்க போய் சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டுல. சும்மா இங்க கத்தாதீங்க. Sir, second example. உங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க மைக், நீங்களும் பேசுங்க. So, சென்னை மெட்ரோ இல்ல நீங்க சென்னை மெட்ரோ பத்தி பேசுறீங்க இல்ல, நான் உங்களுக்கு மெட்ரோ பத்தி சொல்றேன். மெட்ரோ பத்தி பேசுனீங்க, நான் மெட்ரோ பத்தி சொல்றேன். பின்ன அவர் எழுத கத்தலாமா அப்படி? நான் சொல்லக்கூடாது, நீங்க என்ன வேணா எனக்கு அகைன்ஸ்ட் பேசுவீங்களா? நான் பேசுவேன், அதிகாரத்தோட பேசுறேன், அவருக்கு அனுமதி கேட்டு பேசுறேன். அவங்க கிட்ட நான் அனுமதி கேட்டு பேசுறேன். You can't tell me that I can't say. மரியாதை இல்லாம அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா மெம்பருக்கு நான் சொல்லமா இல்லையா? அதுவும் அவர் தமிழ் புரியுதோ இல்லையோ? இல்லைங்க சிவா, நீங்க 2 முறை இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் பாக்குறேன், நீங்க நியாயத்தை பேசுறது இல்ல சிவா. நான் சாரி, உங்களுக்கு மன்னிப்போட சொல்றேன். நீங்க தயவு பண்ணி சிவா கிட்ட பேசுங்க. சார், மெட்ரோ பத்தி I'll say it in English, sir.
Tirchi Siva, who's a very senior member. I respect him. We've had a lot of exchanges about differences in ideology. We've been talking. This is something which goes on. But since he raised the issue of metro, again I'm saying, it was the decision of the state government to not have the center do it, and it was a decision that they will do it themselves. This government or that government, I'm not getting into the picture. Now, if the state government has chosen to do it, it is their decision. And in a press conference later, when it was all charged against us, your urban development ministry is not sanctioning, you were supposed to get multilateral banks loans, you're not giving, Modi is not doing anything for Tamil Nadu. I was there in the press conference and explained it. Initially, central government said, we will get the multilateral assistance and support Chennai Metro Project 2, Phase 2. The state government, whichever the state government was, chose not to have it. From the center, they said, no, we'll do it ourselves. All right? Excuse me, sir, I am the minister. I was in the discussion when your ministers had come. I was the minister at that time. I heard it. I heard it. Honorable Member Wilson, please go check it up with your own government. Mr. Wilson, No, I'm sorry. I've said this even in a press conference in Tamil Nadu. I'm saying it in English in Rajya Sabha. That decision of the state government, we honored and left it and said, whenever you want to think about it, come back. If you want, I'll get the multilateral loan. Then, last year, Prime Minister Modi said, we'll do that for them. Because Honorable Chief Minister from Tamil Nadu had come, met up with the Prime Minister and said, we would want you to take it. And Prime Minister conceded. This is on record. This is on record. So two instances where the central government volunteered to say, Appa Jallikantu ungalodu dhaan unga sattathila neenga maathikana dayavu panni neenga pannikanga. It is in your powers to change it and say Jallikattu will be allowed in Tamil Nadu. One second, Honorable Finance Minister. Honorable members, the reply to the discussion on the Union Budget 2025-26 is underway. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. to conclude today's business. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Thank you, Honorable Finance Minister. So, sir, in both the instances, the centre kept saying, we are willing to do it. But when it happened, even though they were alliance partner with the Congress, they didn't stop it. We didn't hold it against them. But we came and explained, saying, it is not us. It's not Prime Minister Modi who halted Jallikattu. On the contrary, we helped that even in the Supreme Court, we said, no, it should be part of Tamil Nadu's culture, so do. That was done by us. And so was this one, Metro, also done by us. Sir, highways, sir. Highways, 4,100 kilometers of national highways constructed in Tamil Nadu since 2014. 5 greenfield corridors being built under Bharatmala project in Tamil Nadu. Salem Airport operationalized under UDAN. New integrated terminal building phase 1 of Chennai International Airport developed at a cost of 1,260 crores. Social infrastructure. Over 12 lakh house built under PM Awas. Nearly 59 lakh households. Toilets constructed under Swachh Bharat mission. Nearly 89 lakh tap water connections provided under Jal Jeevan mission. 78 lakh Ayushman cards provided. 1,350 Jan Aushadhi Kendras operationalized. 1.6 crore Jan Dhan accounts opened. 5.7 crore Mudra accounts sanctioned. So, Tamil Nadu, sir. Tirchi Airport, Honorable Minister Murugan is also saying about it. That got inaugurated. Please take your seat. Honorable Finance Minister, please continue. Honorable Finance Minister, please, your reply is complete. Yes, thank you, sir. No, please take your seat now. No, nothing further. Nothing further. Honorable members,
There are 23 permitted special mentions for today. A special mentions of those honorable members who are present now shall be deemed to be laid on the table of the House. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 10th March 2025.